Is my screen is visible? All of you? All of you? Hello? Yes, sir. Okay. In previous class, we have discussed about learner-centered methods, types of learner-centered methods. In that, we covered in that assignments. Assignment, we have discussed about assignments. So what are the assignments? Assignments are work given to the students or learners in able to solve the problems or to gain the new knowledge. To gain the new knowledge, or they have to apply some knowledge to solve that assignment. Assignment is not simply to copy paste of the material. 1 minute. That is the assignment. The teacher plays a important role here also, even though learner is main role. To solving the assignment, to complete the assignment, learner uses his knowledge. He will think, he will self-study, and the more work is for learner or student. That's why the assignment we will call as a learner-centered teaching method. By giving assignment, number of assignment, different varieties of assignment, the learner is focused to learn something new. That is the learner centered method. The assignment should be open ended, should not promote the should promote the creativity among the students. Open ended means, already in previous class I have told that open ended means if any assignment if you given, then whatever student answer he has solved the assignment, that is further leads to the another in-depth study or a further question or further improvement or additional knowledge. The assignment should go on, not end that time only. That is the open-ended. Open-ended meaning is the assignment should be in a such a manner that should be it may be used as a continuous work, and additions may be add on the later. That is the open-ended. Closed-ended means if assignments, if you give close-ended like that, for that particular time, for that particular assignment, if the assignment is solved, no further scope of studying of that particular topic or subject. So assignments are always open-ended and promote the creativity among the student. That is the assignment. Next, advantages this assignments. Then I say it helps students to work independently. It helps in sharpening the students' analytical comprehension and problem solving abilities. It helps in developing creativity among learners. Overall learner centered है. So if you give some assignment, for example वात दोष का बारे में चरका शिशुत वाग्भट में किधर किधर रेफरेंस है, कौन सा चैप्टर्स में, like that if you give assignments, so the learner will work independently. He will open the all the samhitas, he will search for chapters, he will search in the index, and he will notate the reference, whatever where are these particular references are quoted in our classics. So in that time he may use his knowledge, comprehension, other knowledge or other things also he may learn with when he is solving that assignment. He may read in between, he may read other topic also, and that will lead to the creativity among and extra knowledge, comprehension and development of his creativity and interest in that particular topic. And it is open-ended. So when the assignment is completed, when in this assignment
you are done the work of finding the reference of this vata dosha in the birth race. Then further next time, what are the references, where the references are there in the lagut race. Like that, you can extend that assignment. That is the open end. That type of assignment you should give. That is the advantage of assignment. Limitations, what is the limitation of this assignment is, students may copy material from each other unless the assignments are carefully planned. ये बिगेस्ट लिमिटेशन क्या है, अगर हमने असाइनमेंट दिया, वन स्टूडेंट सिंसियरली वर्क एंड डू द मेक द असाइनमेंट, another one simply copy the material from each other and they will submit the assignment. Because of this, the whole aim of the giving assignment is flopped. Because of that, we should give the assignment carefully and plan. You will divide the assignment or make the assignment as a the student should not copy directly from one other. So that's why in each student the assignment we should give they may not copy from each other. That type of, for example, for a particular student or group, you take the reference from this particular samhita. For this group, you came from this particular. Further, may dividing from Sharirasthana, this roll number of students, you should go to the book and write the references. Like that, if you divide and planned the assignments, then there is a less possibility of copy of material from each other. That is the thing. It is in our hand, giving the assignments. Yes, limitation is copy material from each other. One student से दूसरा बच्चे copy करके simply he may submit the assignment without doing all these things. Then he may not get any knowledge or abilities. The purpose of giving assignment fails here. Then case study. What is case study? Actually, it is not in the means like that. Case means in usually in our health field, case means we will think about patient. It is not like that. Case study means in general concept of case study in education, we have to learn in that sense. Case study means particular problem, particular situation, the teacher will give, then the learner will actively thinking about that particular situation or problem, how to solve or how to find out the probable solution for, or how to solve that particular thing. That is the case study. Case here in the sense of particular type of problem. It may be imagined one or it may be real problem. That case the student should follow, learner will follow and find out the solution by his own thinking and his own abilities. That is the case study. It provides the opportunity for participant to critically examine, analyze, evaluate, and express reasoned opinions. For example, in your area, what is the health problem, major health problem? For example, malaria. In particular areas, malaria is more. I am giving once again the medical related exam, but case related means, for example, in your area, what is the biggest problem? So water problem, water supply problem. So that is the case study for that student or that person. He may study why in this area, this village, the water problem is there. He will go in detail, he will think, search and critically examine, and he will express the reason why this village is a shortage of this water supply or other water related problems. This is the case study. Usually we can give this case study in the different fields. In law also, the learning lawyers, the students will also give the different cases. They will follow the case study and they will do work. In journalism also, the students will do the different type of they will give the different case studies. Then the students or learner will do the case study in detail about that particular thing. They will submit their opinions. That is the case study in the sense of broader sense. That is the case study. If you apply in the health science, once again, our health related disease and whatever thing relate with health only, we will study. In our view, the health related issues are cases. That is the concept of case study. But case study here is it means that all the field related case, not the patients.
If you related with health sciences, then it may patient. But case study means any particular problem situation, the participants are given and they are critically examined and express their opinion based on their analyze, their knowledge, their evaluation. That is the case study. Uh, Journalism, in journalism you may heard about this case study. Particular student is doing particular case study about different issues or different matters. That is the case study. It enhances the decision making and problem solving skill. What is the importance of case study is decision making capacity and problem solving skills will develop here. That is the importance of case study, because we are giving one problem, currently facing problem, a real problem. That's why he may go critically exam, analyze, then it enhance the decision making capacity and solving skill. How I can solve this water supply or water shortage problem for this village, because we are giving entire case for his studies. So he will find out the some proper solution, or he may think that here how can I solve this water shortage problem. So decision making and problem skills, solving skills are developed here only. In our health related, in for example, in number of questions will we ask the particular patient, so 14 years old, developing from this type of condition, he has this type of situations, so what will you do? This type of questions we will ask sometimes, or we will read in the textbook. So that gives the decision making. We will go by one in that case. We will do for this based on the signs and symptoms, the probable diagnosis this, we will advise this, we will make the treatment protocol like this. That is the case study example in our field. So entire intention for giving the case study is to enhance the decision making and problem solving skill. That is the importance of case study. Limitations are one of the advantages, it leads to the innovative solution by active participation. So then limitations are, to use this method requires training for the teachers. अगर दिस मेथड आपको यूज करना है तो पहले टीचर्स को भी ट्रेनिंग होना चाहिए. हाउ वी विल गिव द केस स्टडी, हाउ वी विल एनालाइज, how we will follow up with that particular learner. Teacher should also need the training for to conduct the case study cases. It cannot be used in all situation for all subject. What is the limitation? All situation and all the subject में this type of learner center method use करने को, नहीं तो कोई कोई subject में नहीं होगा. For example, that subjects are not suitable for this case study, but usually it will given in the journalism, this all law related that thing we may give the case study. So in which all our subjects it is not suitable, we will search and we will apply our knowledge and we may find the answer. Currently there are no examples they have given in textbook and material, not for our subject, in which subject it is not suitable. It is, we will understood this by only when we apply, we will go more practically and we will go on adding our knowledge in this particular concept. So now you have to remember that a limitation of case study is it is not suited for all situation and all subject, because of some moral issues, because of some legal issues, because of social issues. It may not fit for all situation and all subject. That is the concept. All of you understood case study? Yes, sir. Yes, sir. Then the program instruction, a method of self-instruction instruction. This one is given by B.F. Skinner. He is the scholar. He proposed this type of method, that is program instruction. What is programmed instruction? Programmed instruction is based on logical sequence of self-paced learning steps with feedback between each step. It is a general term for highly structured system of learning. इसका मीनिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग मेथड में क्या होता है, एक प्रोग्राम बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन, इस पे क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस रहते हैं. आफ्टर दिस सीक्वेंस वी हैव टू डू लाइक दिस, and in between each step
देयर इज ए फीडबैक. अगर आप एक स्टेप खत्म किया, तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा. यस, you clear this step successfully, then go to the next step, then feedback will available, then go to the next step. दिस इज ए हाईली स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ लर्निंग. इसमें हर एक स्टेप में आपको फीडबैक मिलेगा लर्नर को, एंड ही विल फॉलो दैट लॉजिकल सीक्वेंस एंड इंस्ट्रक्शन, देन ही विल लर्न. Here the learner itself is more active. He will following that sequence. If he done something wrong in that particular step, the feedback will tells that your attempt for answers or your attempt for this work is wrong. This many number of questions are wrong. You are not able to go to the next step. Please repeat the previous steps. This is the feedback. This type of feedback will given in this type of programmed instruction. In this, the learner gets immediate feedback after each step. The programmed instruction is a method of presenting new subject matters to the student in a graded sequence of control step. Sometimes in school education, this technique will used for the presenting newer subject in the students in a graded sequence of control step. Initially, they will make the simple step, then they will give feedback, whether he is doing correct or wrong. Then further the steps will go like that. The new subject matter you will students will learn based on this programmed instruction method. Students work through the program material by themselves at their own speed. After each step, their comprehension by answering an exam question or filling in a diagram. इसका मतलब क्या है? मटेरियल एंड प्रोग्राम को स्टूडेंट ओन, ही विल वर्क ओन एंड ओन स्पीड. इसमें टाइम लिमिटेशन नहीं रहता है. he may take his particular time. He is based on his capability, and each steps their comprehension by answering an examination question or filling in a diagram. So एक स्टेप के बाद आपको फीडबैक मिलता है. फीडबैक के बाद only you can go to the next step. ये आपको समझने के लिए आपको मैं एक वर्क देता हूँ. ये एक्चुअली प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के लिए एक एग्जांपल का है. इफ यू गो टू दी ओपन WHO बोल के एक वेबसाइट है, WHO का ओपन WHO. इन दैट लॉट ऑफ कोर्सेस और देयर ओपन WHO में उस पे सेल्फ फेस्ड रहते हैं. ऐसे बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं फॉर हेल्थ एजुकेशन पर्पज. उस पे डॉक्टर्स, हेल्थ रिलेटेड वर्कर्स also join with your email ID. Then if you choose particular program, or course, whatever thing they have given, then the first they will give the material. First step, you read the material and you should understand the material. They will give the instruction. After the completion of this assignment, you have to fill up the question answer session. After the one reading material, they give the actual duration of 3 hours, 4 hours, but you can take time more than 6 hours, 3 hours also, less than 3 hours also. It is depend on the learner, speed of learner. So after the completion of that step, I will complete and I will go to the feedback or question answer session. Then I will answer the questions based on my reading of that particular step. If particular number of percentage I gained, then only I will move to the step 2. Otherwise that program tells that you are not passed this step 1. Please go to the step 1, read again and complete the test again. Here what happens, each time the questions will different. Almost some questions may repeat, but different questions will come. Because of this, what happens, you have to perfect in that particular step, and then only you can move the second step or second module of that particular program. Like that, they have the different modules in between that exam. Then only after clearing that assignment or questions, that feedback, you can move on. Then finally you can get this certificate or complete that program. This is the one just example. If you really practically feel this type of program, then it is called program instruction. It may be using in the students in the introducing the new subject matter. In open WHO, a lot of subjects are there. They are new to us. How to manage a hospital infection,
outbreak of hospital infection, how to manage disaster, like that. Lot of things are there. They are the based on this program instruction only. So this, if you want practice or experience, you go to the open WHO website and you may enroll the or take the some of the course. That sequence or program you learn based on this program instruction only. Without completing the that feedback or answering the questions, you will not go for second step. That is the programmed instruction. One by one only you can go. That is the concept of programmed instruction. All of you understood? अगर एक यूनिट एक मॉड्यूल से आप सेकेंड मॉड्यूल को जाना है तो फर्स्ट मॉड्यूल का सारे क्वेश्चंस आपको इतना परसेंट 80% लेना ही है. दैट इज द फीडबैक. After getting only that much of marks, then only you can move to the second module in that course. Otherwise you will not able to move the second module. That is the concept of programmed instruction. अब directly first module के बाद without feedback or without filling that question answers, you can't go to the second module or second chapter of that program. That is in the sequence and logical manner. They will step by step, they are arranged material or sometimes videos. Video content is also there. That is recorded one. You have to go through that material or video and you will understand by your own and you will follow the instruction and ultimately you will complete the that course. In adult, as we are adult, we will do in the ourselves, but in a students this type of programs are done and they that time the teacher may give the assistance in students in that condition. So this is the programmed instruction. It is a self-learning or learner-center method of learning. Programmed instruction, I have given one link also here. If you go to this link, some one YouTube video is there. They have explained this programmed instruction. What is programmed instruction? So this is a principal programmed instruction. It is not a narrow one. A programmed instruction means this is only different books, different context. They have used this programmed instruction. But what should we know the concept is? It is in the sequential order. If immediate feedback will be given in between each step, and after the completing, after the perfecting that step only, we will be able to move on the next step. That is the programmed instruction method of learning. All of you understood what is programmed instruction? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Advantages of this program instruction का advantages क्या है? There is a regular feedback. Regular feedback means each step, after the step there is a feedback only. If teacher is there, the teacher will give the feedback. In school students, as you are correcting, go for the next step. Otherwise you are doing wrong, see for the exact step in presence of teacher. But as we are using online methods, the question answer or assignment or a particular thing will giving the feedback. Whether the computer ready-made program or teacher, whoever may giving each step, there is a regular feedback. That is the concept behind this. In school children's, if you are using newer subject, then feedback, how the child will know the feedback, whether it is correct. In the presence of teacher only, the teacher give the feedback or any instructor give the feedback. That is why we should understand this concept. In every stage, this will differ based on the, but that principle is there. Every step, there is a regular feedback. This enables the active participation of the learner and can be used in all subjects. So this thing we can use it in the all the subjects. That is the major advantage. This is this type of learning method, the learner center method or learning method. We can use it in the all type of subject. Limitation: it is not suitable for ever-changing course content. It is not suitable for affective domains and psychomotor domains. अगर कोई सब्जेक्ट का कंटेंट बार बार चेंज हो रहा है दैट कोर्स का, देन इट इज नॉट सुटेबल, बिकॉज उस अपग्रेडेशन हो रहा है, उसमें कंटेंट में बदलाव हो रहा है बार बार, देन दिस टाइप ऑफ चेंज इंस्ट्रक्शन को हम नहीं कर सकते, बिकॉज
वी ऑलरेडी डन द प्रोग्राम्ड. अगर बार बार कंटेंट चेंज हो रहा है तो दैट we have to change for that contents in program also. That is, it is not suitable for ever changing course content fixed है, then it is suitable. बार बार चेंज हो रहा है कंटेंट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट विल चेंज रिपीटेडली, देन इट इज नॉट सुटेबल फॉर that type of contents. But it is suitable for all subject, whatever the subject it is suitable, but content should be not repeatedly changing or ever changing that content. And it is not suitable for affective domains and psychomotor. इस पे cognitive domain का ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. आप खुद का खुद पढ़ाई करते, फीडबैक लेते, नेक्स्ट स्टेप को मूव होते. इसमें साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स को सुटेबल नहीं है. ओनली कॉग्निटिव डोमेन विल affected by this programmed instruction. Then next one is personalized system of instruction. So program instruction, this is personalized system of instruction. Personalized system of instruction, PSI, could be used for all subject except where the students have to select the contents. Learners must master a series of units assisted by teachers, proctors and enriching lectures before proceeding to the final test. इस पे क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट में पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट वेयर द स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट द कंटेंट. इस पे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए देते हैं हम कंटेंट को. लर्नर्स मस्ट मास्टर ए सीरीज ऑफ यूनिट्स, मास्टर होता है इस पे. लर्नर्स क्या होते हैं, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते दैट कंटेंट, दे विल go to the in detail about that content. Learners must master a series of units assisted by teachers, proctors means exams, enriching lectures before proceeding to the final test. For example, अगर आपने MD होने के बाद भी सर्टन डिग्रीज रहते हैं, वो डिग्री हम हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का सामने लगाने के लिए हम करते हैं ना, FAG, FAMS, different types of degrees are there. They are mastering of the subject. In that particular subject, they are giving the more knowledge. So they will use that series of units, some assisted by teachers, and they will give the exam, and they will give the final test, and they will obtain that particular type of degrees. That is the a concept of personalized system of. Personalized means he has to select the content and go in detail. Mastery of series of units, master होता है particular subject में, content में. He may assisted by teachers, assisted by proctors means exam, enriching lectures का भी आप use कर सकते हैं और help ले सकते हैं before proceeding to the final test. Final aim of this personalized system of instruction is mastery of that particular subject or concept. इसमें 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मास्टरी ऑफ लर्निंग, सेल्फ फेसिंग, सेल्फ पढ़ाई करना पड़ता है, स्ट्रेस ऑन रिटर्न मटेरियल. यार ज्यादातर वीडियो और अदर मटेरियल से ज्यादा रिटर्न मटेरियल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करता है. मतलब these knowledge are available, this course material are available in the written format. That is the stress on the written material. Proctors and lectures are 5 basic elements of this personalized system of instruction. इस पे ज्यादा आप याद रखना है, रिटर्न मटेरियल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं. सेल्फ फेसिंग, सेल्फ लर्निंग है, मास्टरी लर्निंग है, प्रोक्टर्स लेक्चर. ये MD के बाद लगाते हैं ना कोई स्पेशलिस्ट, FAG, FAMS, lot of degrees are there. How they are doing? They are enrolling, they are given the material, written material, they will study, they will give the exam, they will add on their degrees. That is the proctors means exam देना पड़ता है last finals में, whatever the method, but they have mastery over that subject. That is the concept of personalized system of instruction. It is suited for content that are be delivered through written material. ऐसा contents के लिए suitable है this personalized system of instruction. रिटर्न मटेरियल्स के थ्रू डिलीवर करना चाहिए हमको. वैसा सब्जेक्ट के लिए, वैसा कंटेंट के लिए दिस इज सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ
personalized system of instruction are suitable. So if you want more details about personalized system of instruction, for examples, I will share the number of downloads in the online. But just you have to remember, I will use some examples. Even though here, even in textbooks also, they have not given the proper example. Just it is a type of learner center learning method where we can use the this uh, things like material mastery over the learning and self-facing stress and return material proctors lectures. With help of these 5 basic things, we can go for the final exam and get the that degree, or we can learn the that concept. That is the personalized system of instruction. That's how this personalized system of instruction will tell. The examples and other in detail materials I will also searching. I have downloaded 2 3, but they have not specifically given example or any concept. Just you have to remember that these things are there: mastering of learning, and this is suitable for the written material content. That is the concept of personalized system of instruction. All of you understood? All of you understood what is personalized system of Yes, sir. instruction? Just you Yes, have to sir. remember that in this type of learning, the learner will go to the mastery of that particular subject by written materials, lecturers or teachers. He may take some text proctors, means some exams, and he will master that content, and he will learn that content or subject. That is the concept of personalized system of instruction. लेक्चर लेक्चर्स का भी सहाय लेता है, एग्जाम्स का भी सहाय लेता है, रिटर्न मटेरियल एंड सेल्फ फेसिंग, खुद पढ़ाई करते हैं. मास्टरी ऑफ लर्निंग, मास्टरी मीन्स इट इज गोज इन द डेप्थ, इट इज नॉट सुपरफिशियल लर्निंग, एंड इट इज सुटेबल फॉर रिटर्न मटेरियल. कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा कंटेंट के लिए अवेलेबल है, दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट के लिए ये सुटेबल है. अदरवाइज इट इज नॉट सुटेबल फॉर अदर टाइप ऑफ सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट, बिकॉज it is stress is given on return material, because documentation चाहिए उनको. मैंने इतना पढ़ाई किया, हमारा मटेरियल इतना था, इस पे मैंने मास्टरी किया, उनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए. दैट्स वाई रिटर्न मटेरियल में वो ज्यादा फोकस करते हैं इन दिस पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन. वीडियो का बारे में आइडिया, अदर टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिटर्न मटेरियल स्ट्रेस ज्यादा रहता है. ये कोई कोई कोर्स में होता है, इग्नो में I have seen, but exactly that are example or not, I don't know, because nowadays IGNOs also started online ODL method. Lot of things are changed, but these are things in previous days. What we see this specialist putting there in their सामने number of degrees डालते हैं ना, so that is the example for personalized system of instruction. They will not go for the college or university, but they have put some degrees. They are adding the mastery of their subject. How they will do that degrees or course, लिखते हैं ना, यूएसए में किया, यूए में किया, that particular things are nothing but they are learning from this system, that is personalized system of instruction. They have done that course in the method of personalized system of instruction. That one example I can give now. समझ में आ गया what is the personalized system of instruction? Yes, sir. Okay. एडवांटेजेस क्या है? इट इज ए बेस्ड ऑन मास्टरी लर्निंग, इट फैसिलिटेट सेल्फ फेस्ड लर्निंग. ये तो मास्टरी है, एक ऑलरेडी एक लेवल में रहता है, सिर्फ मास्टरी. और उनका नॉलेज, मेरा नॉलेज इतना है, ज्यादा है, बोल के दिखाने के लिए कर सकते हैं मास्टरी. वाई दे आर एडेड नंबर ऑफ डिग्रीज, FAs in UA, Canada, like that they will add on number of degrees because it is a mastery of learning. मैं ये सब्जेक्ट में मास्टरी हूँ, that shows the mastery of learning. Then it facilitates the self-paced learning. Own self-paced means own learn करना पड़ते है, वो self own कर learn करने के लिए उनके पास capability है. Already he is a post graduate, he is specialist.
So reading further detail is not burden for him. So it facilitates self-paced learning also. And it is not suitable for ever-changing course contents. Once again, अगर content change होते रह रहे, so that is not suitable for this content. These particular limitations, ever-changing course contents आ रहे हैं ना, इसका behind reason क्या है? Lot of universities have prepared contents, course materials. Once they have prepared contents or course material, it is difficult for change them. Again उनका कमिटी होना पड़ता है, newer content or changing subject को add करना पड़ता है, and a lot of process will be there. That's why the limitation, it is not suitable for ever changing course content बोल के आपको limitations में आता है. That in that sense, अगर course content बार बार हो तो उन content change करने में दिक्कत होता है. अगर इग्नो में भी वैसे है, अगर content वो once they have ready the content and they uploaded the contents or give the materials, सालों भर तक वही कंटेंट और वही मटेरियल रहता है. अगर कुछ नया चेंज हुआ तो वो चेंज करना पड़ता है. वो दैट लीड टू द सम टाइम. अगर वो कोर्स कंटेंट बार बार 6 महीने में एक बार चेंज हो रहा है बोले तो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर दैट देम आल्सो चेंजिंग द कंटेंट्स. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लर्निंग मेथड में क्या है, not it is not suitable for changing course content. Lot of things to be done to update these changing subjects. That's why it is not suitable for changing course content. They have written limitation as it is not suitable for the changing course content. In which background they are telling this one is for this reason only. It is not suitable for affective domains and psychomotor. Cognitive का involvement होता है and affective domains and psychomotor domain में कुछ काम नहीं है this, because it is reading and understanding, comprehending, going more detail in the subject, mastering the subject, nothing more than that. Then open learning. What is open learning? It is the flexible method of delivering the instruction where the learner has full access to the learning resources of material, people, accommodation, equipment, even though regular class attendance are not necessary. The open face-to-face interaction between students and teachers through tutorials should form a part of open learning. There are minimal or no restriction on admissions. Open learning instruction is not suitable for the rapidly changing nature of content as this involves expertise, time and resources. So क्या है ओपन लर्निंग? आपने ओपन यूनिवर्सिटी बोल के नाम सुना है बहुत लोगों ने, मुक्त विश्वविद्यालय बोल के. सो दैट इज ओपन लर्निंग. ओपन लर्निंग मीन्स क्या रहता है, आप रेगुलर कॉलेज जाने के लिए जरूरत नहीं रहती. आपको कोई कोर्स रहे ओपन यूनिवर्सिटी, आप MA किए, BA किए, BSc के, लॉट ऑफ कोर्सेस व्हाट द अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स दे आर ऑफरिंग. सो इट इज फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन. द लर्नर क्या करता है, एनरोल होता है दैट पर्टिकुलर कोर्स के लिए. He can use the library, he can use the lab, he may use the whatever facility given by that institution, he may use that resources, but it is not mandatory to attend regular classes for him. And face to face interaction sometimes होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट जा गए तो he may go to the department and he may take the instruction from the teachers. That is it for through tutorials, or sometimes he may tutorials means he may take the instruction from other sources for online or other teachers. Tutorials means type of tuition. He may take the interaction, face-to-face interaction between student and teacher through tutorials. Like it is not like tradition class में student बैठ के teacher, that type of face-to-face interaction नहीं होता है. It is a type of tutorial type of interaction between the student and that instructor should form a part of open learning. These are forming the open learning. क्या रहते हैं, क्लास को रेगुलर जाने का जरूरत नहीं है, बट स्टूडेंट कैन यूज द रिसोर्सेस, ऑल द स्टडी मटेरियल्स, लाइब्रेरी, लैब, whatever facility given by that university. Yeah, he is have the freedom to use that all the resources. And interaction कैसे होता है, by tutorials, फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर. कोर्स का कोऑर्डिनेटर रहता है, स्पेशली टीचर्स कहने से क्या रहते हैं, दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर रहते हैं दैट कोर्स का. ही मे गो टू दैट कोऑर्डिनेटर, ही मे
ask certain information, what should I next do, what are so instruction will available from the 1 minute. क्या हुआ? नहीं मुझे आवाज भेज रहे. Sorry for the disturbance. So this is the part of open learning. There are minimal or no restriction on admissions. What is this? अगर आपने ओपन लर्निंग में आपका एडमिशंस क्राइटेरिया बहुत इजी रहते, फ्री रहते, कभी भी आप ज्वाइन हो सकते, एंड देर आर नो मोर रेस्ट्रिक्शंस फॉर द एडमिशन. एडमिशन इजी रहते, और रेस्ट्रिक्शन हुआ तो भी मिनिमल रेस्ट्रिक्शन रहते. एज ए फॉर्मल स्कूल, फॉर्मल लर्निंग के जैसे नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते. दिस इज द ओपन लर्निंग. इट इज आल्सो लर्नर सेंट्रिक. व्हाई? Learner are free to wherever he want to go, he use the resources, he can take the instruction, and this is the benefit for the learners. That's why it is called as learner centric. Here the teacher is not that much active, and he don't have any power to control that learner. Here learner is free, and that's why it is called as learner centric method. Open learning is learner centric method. The open learning's instruction is not suitable for rapidly changing nature of content, as this involves expertise, time, and resource. What previously I have explained, why the rapidly changing content subject or content it is not suitable, because repeatedly changing content, if they want to change the materials and the resource according to that changing subject content, it involves the expertise, time, and resource. For example, अगर syllabus बार बार change हो रहा है, so it syllabus review according to syllabus textbook आने के लिए lot of expertise चाहिए, time चाहिए, resources चाहिए. That's why this type of learning methods are not suitable for rapidly changing nature of content. ये बार बार आता है हर एक लर्निंग सेंट्रिक मेथड का मेथड्स में. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू आर सीइंग बार बार, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सपर्टाइज, टाइम, एंड रिसोर्सेस ऑफ द दैट इंस्टीट्यूट. एडवांटेजेस क्या है ओपन लर्निंग के लिए? इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर. फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर, फ्लेक्सिबल रहते हैं, रेगुलर जाना नहीं है, वैसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है. whenever he wish he can go, but exam देना जरूरी रहते हैं, but flexibility learning रहते हैं. That is the open learning. Then limitations, not suitable for achieving effective and psychomotor learning. Once again, it will affect only cognitive, not any outcome for psychomotor and affective domain. It requires time, expertise, and resources. Time चाहिए, time, it requires time तो चाहिए उनको, and expertise needed to create this type of learning, this to prepare the materials, to prepare the programs in open, to handle the all the things related to this open colleges, and resources भी बहुत चाहिए. ये लर्नर कभी लाइब्रेरी में जाते, बुक्स ढूंढते, उधर बुक्स चाहिए, इनको क्या क्या चाहिए, सारे रिसोर्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए. देन ओनली दिस विल बेनिफिशियल फॉर द लर्नर. अगर रिसोर्स नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है दैट कॉलेजेस में, देन इट इज not efficiently, the learner will not learn. That is the limitation of this open source. The next one is heuristic method. What is the heuristic method? This method was supported by Professor Armstrong. So this type of method Professor Armstrong बोल के propose किया है. Then under this method, the student has to find out the answer to his her own problem by unaided efforts. What is the meaning of this? Unaided efforts means by developing a spirit of inquiry and child becomes discover of knowledge. The meaning of this heuristic method is, अगर कुछ problems और questions और आप बच्चे को दिया है, without any support, unaided effort, he will able to solve that problem.
बच्चों को कुछ भी हम हेल्प नहीं करना है, हम सिंपली उनको एक प्रॉब्लम और क्वेश्चन देना है. यू हैव टू सॉल्व योर ओन, यू हैव टू फाइंड द आंसर योर ओन, not taking anyone's help, without unaided efforts. He have to answer for that particular question. That is the heuristic method. By developing a spirit of inquiry, the child becomes a discoverer of knowledge. The main objective of teaching by this method is to teach how knowledge of this can be obtained rather than providing facts about science, mathematics, science, mathematics, and grammar, etc. इसका मतलब क्या है, हम फैक्ट्स प्रोवाइड करने से, अगर दिस टाइप ऑफ मेथड से बच्चों लर्नर्स लर्न कर रहे हैं, हम टीच कर रहे हैं बाय टीचर्स बाय दिस मेथड, देन द मोर नॉलेज हाउ द लर्नर विल gain knowledge, obtain knowledge from this type of science, mathematics, grammar. इसका मीनिंग क्या है, लर्नर का रोल ज्यादा है, he will make more efforts to learn something. That is the concept. Heuristic method means इधर ज्यादा सपोर्ट नहीं देना है हमने. The person will solve his problems by his own or her own, his own effort. That is the concept of heuristic method. That is the concept. Heuristic method, all of you understood what is the heuristic method? Unaided effort. Effort, कोई भी सपोर्ट नहीं करना है. He or she should solve that problem by himself. He may go inquiry and he may discover knowledge. हमने बोलते हैं ना बच्चे को, कभी कभी देखते हैं, let him do, उनको करने को छोड़ दो, कुछ मत बताओ उनको, देखेंगे कैसे करते हैं, वो ऐसे ऑब्जर्व करते हैं ना. दैट इज दैट टाइप ऑफ मेथड, नथिंग बट ह्यूरिस्टिक मेथड. अगर हम वो कुछ गलत कर रहे, तुरंत हम कुछ ऐड कर रहे ऐसा बोले तो बच्चे सीखते नहीं हो. कभी कभी ये स्ट्रेटजी हम यूज करते, करने दो क्या करते देखेंगे, then he will do something and he will get wrong and he may correct. So this is one type of method of learning. That is the heuristic method. It is supported by the Armstrong. This professor ने this method को support किया है. The main objective of this type of teaching method is teach how knowledge of this can be obtained rather than providing facts. Knowledge कैसे हम मैं ले सकते, obtain कर सकते, rather than I am giving all the knowledge about this science, mathematics, grammar, everything I am actively देने से बच्चे कैसे खुद कलेक्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं नॉलेज, his or her own capacities. That is the method of heuristic method. समझ में आ गया आपको? हेलो हेलो. Yes, sir. Because a lot of textbooks and material given different types of sentence, but concept you have to clear. If you read anything, you have to understood the concept. Heuristic मतलब क्या है, कभी कभी ये अडल्ट लर्नर्स का व्यू ऑफ पॉइंट से भी ह्यूरिस्टिक मेथड का एक्सप्लेनेशन मिलता है किधर किधर आपको. बट वॉट एवर थिंग दे हैव रिटन, यू हैव टू रिमेंबर दैट ह्यूरिस्टिक मेथड मीन्स लर्निंग बाय अनसपोर्ट. The learner will learn with his effort. He will become discoverer of knowledge. That is the concept of heuristic method. It is supported by the Professor Armstrong. So it is not like that everyone strictly follow this one. These are the whatever methods, whatever things happening in the teaching learning methods, we are learning. It is not restricted. We have to go for this type only. This is the cut clear boundaries are not there for every type of method. It is like a continuous. इस पे ऐसा ही होना है. इट इज नॉट लाइक दैट. अगर ये पर्टिकुलर मेथड सुटेबल हो रहा है दैट पर्टिकुलर पर्सन को, then we will call as a heuristic method. Not all methods are suitable for everyone, and not as we are reading, learning, we may not able to see in the practically also, or we are not exactly correlating whatever we learning in this method. It's just by observing and by experience only we can actually actual picture क्या है ये समझ सकते हैं. Just we are learning the concept. What is this? Yes, this means this.
now we are in the stage that yes, heuristic method is this, but we are, as we move on, as we will learn, teach number of patient, number of students, we will observe, we will also self go for self learn, then only real meaning of this concept we will understood. That is the concept. Now heuristic method is self learning without unaided efforts. You have to remember this method. This method comes later on concepts also. Heuristic method, I will provide materials in detail. Materials is there regarding this heuristic method. You can go yourself. You can understand the heuristic method. For now, you have to remember this much: heuristic method. Then differentiated instruction. What is this method? Differentiated instruction is a proactive and dynamic method of teaching. It means that the teacher uses varieties of ways to teach, plan to learn. It is a combination of small group, whole group, individual instruction methods. In these methods, the qualitative aspects are more focused than the quantitative aspect. It makes use of multiple approaches to accommodate multiple intelligence. It is student-centered, meaning that lessons are engaging, relevant, active, interesting. It is planned and organized method of differentiated instruction. This type of method का main concept मैं आपको बताता हूँ. This is a proactive. Proactive means एक्टिव. आप लोग सब सुना है. व्हाट इज प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव मतलब वर्क टीचिंग स्टार्ट होने से पहले भी सर्टन एक्टिविटीज, सर्टन थिंग्स वी विल डू. दैट इज द प्रोएक्टिव. देन डायनामिक मेथड ऑफ चेंजिंग. डायनामिक मेथड ऑफ टीचिंग मीन्स ये एक स्ट्रिक्ट और कंस्टेंट पैटर्न से टीचिंग नहीं होता है. डायनामिकली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन एंड number of varieties and ways the teacher will plan to teach. That is the different way, with not a single way. How the teacher will plan is a different way. We only, he is not restricted for particular way. I will teach like this only. This is dynamic method of teaching. अगर स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स को हम ये डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं. अगर होल ग्रुप एंड इंडिविजुअल एट इंडिविजुअलिटी लेवल आल्सो we can instruct or use this method, differential instruction. स्मॉल ग्रुप बना के उनको भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, होल ग्रुप को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. एट इंडिविजुअल लेवल आल्सो वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस small group, whole group and individual instruction methods. In these methods the qualitative aspect हम ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं. वी वांट क्वालिटी बिकॉज आप एक ही श्लोक का एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ो लेकिन ठीक से पढ़ना है. दैट इज द डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ाई किया है टीचिंग मेथड में. व्हाट इज इंस्ट्रक्शन वी हैव लर्नड, बट हियर डिफरेंशिएटेड, दैट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. द इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टीचिंग का टाइप में हम इंस्ट्रक्शन भी बोल के एक किया ना, उस पे क्या है इंस्ट्रक्शन का मतलब? Teacher will go on instructing the student. The students or learner will follow that one. It is teacher centric. That is sometimes the instruction and teaching are interchangeable. We have discussed in the teaching methods. All of you remember the instruction का concept हमने उधर पढ़ाई किया है. When we have to call that as a instruction. याद है आपको? Hello? All of you? टीचिंग में हमने किया था ना वो इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन, व्हेन वी कॉल इट एज ए ट्रेनिंग, conditioning. 4 types we learn in that. That is the instruction. But here is it is learner centric. That is teacher centric instruction. Here differentiated instruction, it is we are reading under the learner centrics. What is the difference between there and here? Here the dynamic change and different type of ways are adapted to learn, to teach and learn by the learners. Small group होता है and qualitative aspect पर focus करता है and multiple approaches, multiple intelligence students को it is a student centric means lessons are engaging, relevant, active and interesting. इस पे क्या होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट सेंटर रख के हमने इंस्ट्रक्शन करता है. दैट इज द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. इफ सिंपल इंस्ट्रक्शन क्या है, इट कम्स अंडर द टीचिंग. दैट इज द टीचर सेंटर वन. हियर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इट इज स्टूडेंट सेंटर. इस पे एंगेजमेंट रहता है, बच्चों को भी एंगेज करते हम
रिलेवेंट पोर्शंस को ये करते एंड एक्टिव एंड इंटरेस्टिंग रहते हैं. इट इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग एंड क्वालिटी के ऊपर हम फोकस करते हैं, नॉट फॉर क्वांटिटी. इतना सिलेबस कवर करना है ये हमारा ध्यान में नहीं रहता है, क्वालिटी हम कितना कवर करते हैं एंड but the quality of that understanding that concept is important. That is the differentiated instruction. ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा. व्हाई आई एम मोर स्ट्रेसिंग बिकॉज सिंपली रीडिंग दिस sentence or slides you will not able to clearly understand the what is the concept. अगर टीचिंग में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ाई किया आपको याद रहना चाहिए. व्हाई देयर वी आर टेलिंग दैट इंस्ट्रक्शन कब कहना है उसको हमने स्टडी किया है. वही सेम चीज इधर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोल के हम पढ़ाई कर रहे हैं. सो उस पे इस पे difference hai. That's why it is student centric. That instruction is teaching is teacher centric. Simply the teacher will instructing do this after this the students. One picture we have seen in that class. Anyone remember instruction में? Remember है आपको एटलीस्ट याद तो है? आप बताओ मत, एटलीस्ट सुना है ना इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, दैट इज द इंस्ट्रक्शन. उधर क्या था इंस्ट्रक्शन का मतलब? आप एक बार रिवीजन कर लो, बाद में स्लाइड्स देखो. दिस इज द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, DI. इस पे क्या है कंटेंट, इस पे कॉन्सेप्ट क्या चेंज है आप देख लो. दिस कम्स अंडर स्टूडेंट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड. दैट इंस्ट्रक्शन इज टीचर सेंटर्ड. समझ में आ गए? द डिफरेंशिएटेड वर्ड इटसेल्फ इज डिफरेंशिएटिंग दीज टू. सिंपली इंस्ट्रक्शन बोले तो आप वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए. व्हेन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आए तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. समझ में आ गया? इंस्ट्रक्शन इज टीचिंग. सिमिलरली वी विल टेक दिस बोथ वर्ड्स, बट व्हेन वी विल कॉल इंस्ट्रक्शन वो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन किया है. So this is differentiated instruction. We are learning under the student center or learner center method because it will engage, it will relevant and active and interesting, dynamic रहता है. It is organized method रहता है, small group, whole group, instruction देते हैं. It is comes under the instruction, but it is differentiated one from that instruction concept. That's why it is learner centric. You go through that concept instruction, you read there what is instruction. Then you also read this differentiated instruction. Then you will understand what is the difference between these two. Why that comes under the teacher centric? We can categorize that as a teacher centric. Why it is categorized under the learner centric? You will understand by comparing both the concept. All of you understood? समझ में आ गया आपको concept? Differentiated instruction. Yes, You have to focus on concept and terms also. Instruction आप पहले स्टडी किया है, बट हियर इट कम्स एज ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. Differentiated instruction may mean teaching the same material to all students using a variety of instructional strategy. स्ट्रेटर्जी वही रहते हैं, बट हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट वैरायटी यूज करते हैं हम. उधर वो इंस्ट्रक्शन में क्या रहते हैं, सिंपली ऑल स्टूडेंट को एक ही इंस्ट्रक्शन देते हैं. हम इधर बट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या करता है, सेम मटेरियल डिफरेंट स्टूडेंट्स को वैरायटी हम सिखाते हैं. It may require the teacher to deliver lessons at varying levels of difficulty based on the ability of each student. Each student ability के base we will instruct. That is the differentiated instruction. That's why it is called as a learner centric or student centric. समझ में आ गए? Differentiated instruction. This is important one. Learner centric method में आता है. So this completes the learning methods. So any doubt up to here? अब और एक बार रिवीजन करना है और प्रीवियस क्लासेस का स्लाइड्स मटेरियल्स आप पढ़ना है, रिकॉर्डिंग करना है और रिकॉर्डिंग देखना है, और आप खुद अदर सोर्सेस अदर मटेरियल्स को पढ़ना है, तभी आपको एक कॉम्प्रिहेंस पूरा ओवरव्यू मिलेगा. these are the things, just I am sensitizing you, basic ground idea आपको दे रहा हूँ मैं. So based on this you will read different materials, you are able to understand that concept. It is like a ABCD only, ABCD of this subjects, what we are giving ABCD. Based on this knowledge you have to construct or understand the other things also.
With this basic knowledge, you can apply this knowledge, and you may able to understand the difficult concept in the different textbook also. At the end of the session, if you want, we will give the textbook name. You may take that textbook, but it is difficult in initial time to understand your own. That's why we are doing this strategy. To understand that concept, you have to know these basic things. If you are not revising the what we are discussing in the classroom, it will not help for your exam, because repetition चाहिए. These are new concept, new subject. अगर आप बार बार पढ़ोगे नहीं, आपको दिमाग में क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट. अभी क्लास में सुनने के टाइम हाँ ये है, ये लगता है, लेकिन एक्चुअली इफ यू गो क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको बार बार पढ़ाई करना है, डिफरेंट सोर्सेस से आपको सीखना पड़ता है, तभी आपको आंसर्स मिलेगा. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, कोई लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस करके नहीं आता है इस पे. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर एग्जाम्स एंड दिस एग्जाम. दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. समझ में आ गया सबको व्हाट इज दिस लर्नर सेंटर मेथड में क्या क्या आता है. The question may be like this: the differentiated instruction is a teacher centric, learner centric, content centric, none of the above. So if you know the differentiated instruction and instruction are different, you then only you may answer it comes under the learner centric method. That is the concept. Then now we will go to the online methods of teaching. Next topic. Any doubt here up to this? All of you? Any doubt? Yes, sir. अगर अभी डाउट नहीं आया, बाद में भी आप डाउट पूछ सकते हैं. अगर एक बार आप रीड किया, आपको डाउट आया, तो आप डाउट पूछ सकते हैं. वैसे नहीं अभी पूछना है. आप एक बार थ्रू मटेरियल पीपीटी के आप खुद पढ़ के आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कैसे समझ रहे, वो आपको आपके ऊपर डिपेंड रहता है. आप खुद का खुद आपका हिसाब से आपको समझना है. सो दैट इज द थिंग. तब तक ये एक्सरसाइज आप नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. आप आपका हिसाब से पढ़ाई अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए बेस्ड ऑन आवर क्लासेस एंड मटेरियल. देन we will go on online methods of teaching. That is, online methods used in teaching are these some textbook learners methods में क्या दिया है, वो offline methods and online methods. Why online methods are learner centric? Because learners after this class you are able to understand why the online methods are learner centric. They are categorized under the learner centric. So the first one is MOOC. What is MOOC? Anyone heard about this MOOC term? Online courses, online course के लिए MOOC बोल के एक abbreviation है. Anyone heard before this MOOC? MOOC courses. So what is MOOC? MOOC. Massive Open Online Course. Massive online open online course. That is the abbreviation of MOOC. इसका मतलब क्या है? If you go on the web, lot of courses are available on the online. Different subject, different fields, lot of courses are available in the online. This is the massive open online course. So why it is abbreviated MOOC means, for this particular courses, massive, how many number of students can enroll at a time. That is the M means massive. अगर क्लासरूम ऑफलाइन मेथड में होना चाहिए, तो आपको एक रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, 100 बच्चे, 150 बच्चे, 50, वैसे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं. बट हियर अगर 10,000, 1 lakh, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर एनरोलिंग दी ऑनलाइन दिस ऑनलाइन कोर्सेस. दैट्स व्हाई द M abbreviation is given. Massive number of students can enroll at a time. That is the M. And open,
anyone anywhere can register these courses. इसके लिए eligibility criteria, documentation ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. Open, it is open in online. You can join in anytime, anywhere. You can register for these courses, online courses. That is the second abbreviation. Open, it is open. Then online. Online internet चाहिए. Without internet, this you are not. That is onlinely you can available this course. That is the second O. Massive open online. C means course. These are the different courses they are providing in this online platform. That is the abbreviation of MOOC. MOOC. That is the MOOC. It is the massive open online course. Number of courses are available in online. That courses we called as a massive open online courses. MOOC stand for this massive open online courses. MOOC have become a famous avenue for diverse learners to upgrade their knowledge and skills. It is a web-based platform that provides unlimited number of students worldwide with a chance of distance education with best institution in the world. MOOC का एक बेनिफिट क्या है? आप किधर भी बैठ के वर्ल्ड बेस्ट टीचर से अगर वो कोर्स बना रहे MOOC प्लेटफॉर्म में, MOOC कोर्स बना रहे, सो यू मे लर्न बाय योर ओन प्लेस, ऑनलाइन से सीख सकते. इंस्ट्रक्टर एंगेज्ड इन MOOCs टेंड टू फोकस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इमिटेट देयर क्लासरूम एक्ट. इस पे ऑनलाइन में तो वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, डिफरेंट एप्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू डिलीवर द लेक्चर. वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज करते हो ऑनलाइन में, सो द क्लासेस बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड एंगेज. It was set up in 2008, but 2012 के बाद पॉपुलर हुआ है these MOOCs. MOOC provide opportunity to their learners such as video lectures, downloading notes, contributing their own, and sharing their point of view by communicating with peers. Term MOOC was given by the Canadian academician Dave Cormier. The MOOC term coin किया है this academician Dave Cormier. This academician ने ये टर्म को कॉइन किया है, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. सो स्वयं का बारे में आप लोग सुना है? स्वयं नाम तो सब लोग सुना होगा ना, स्वयं. एनीवन? These online methods of teaching is very important for next classes credit के लिए. अगर हायर एजुकेशन में ज़्यादा फोकस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, इसलिए दिस क्लास विल वेरी इंपॉर्टेंट. अगर क्वेश्चंस कितना आते पता नहीं, लेकिन दिस विल इम्पोर्टेंट फॉर नेक्स्ट लर्निंग्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए. सो स्वयं का बारे में कोई सुना है? स्वयं, व्हाट इज स्वयं? एनीवन डन कोर्स ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म? Yes or no? Yes बोले तो yes बोलो, नहीं बोले तो नहीं. I will move on. Yes or no? No. Oh yes. So स्वयं is a platform. स्वयं क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, हमारा इंडियन ओरिजिन है. ये स्वयं नाम किधर से आया? दिस टर्म संस्कृत एक्रोनिम स्वयं मीन्स मी. इसका मतलब वो होता है ना स्वयं, संस्कृत का मीनिंग. दैट टर्म को यूज किया है, स्वयं नाम रखा है. दैट स्वयं SWAYAM, that is a stands for Steady Webs of Active Learning for Young Aspirant Minds. That full abbreviation of that SWAYAM is Steady Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds is an Indian massive open online course platform. अगर आप सिंपली गूगल में MOOC बोल के टाइप किया है ना, आपका वर्ल्ड वाइड किधर किधर ऑनलाइन कोर्स है सब दिखने लगेगा. That is MOOC. MOOC is a general term, massive open online course. But for Indians, Indian course के लिए स्वयं is a platform. If स्वयं आप open किया, then number of open online courses are available in the स्वयं. स्वयं is a platform for Indian courses. That's why if you simply go MOOC in the website, it will open lot of courses throughout worldwide. If you go स्वयं, it is Indian made and Indian ऑनलाइन कोर्सेज के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म है. मतलब हमारा इंस्टीट्यूशन इंडियन रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज है ना, इस स्वयं प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा. स्वयं संस्कृत एक्रोनिम स्व, उससे लिया है स्वयं. इसका एक्रोनिम, इसका फुल फॉर्म क्या है स्वयं का? कभी कभी पूछता है. स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स.
एक्टिव लर्निंग वेब्स मतलब वेबसाइट से मिलता है. एक्टिव लर्निंग, द वर्ड एक्टिव लर्निंग मीन्स हियर द स्टूडेंट सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक. लर्नर इज मोर एक्टिव. मुझे कुछ नया सीखना है, नया कोर्स करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है. दैट्स व्हाई एक्टिव लर्निंग, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द लर्नर सेंट्रिक. Active learning for young aspiring minds. Young aspiring minds, you are, all of you are younger minds. If you want active learning, then this Swayam gives the platform for us. That is the concept of Swayam. Then what are the features of Swayam? Highly quality learning experience with the help of multimedia and anytime everywhere basis. Just you listen, I will show practically what is the Swayam, how it will work. I will give the a demonstration also in after this completion of this. High quality learning experience मिलता है स्वयं में, because of they will use multimedia, video audio quality editing बहुत अच्छा करता है. So that's why high quality of learning experience आपको मिलता है. It is one stop web location for interactive e-content for all courses from school to यूनिवर्सिटी लेवल. स्वयं में आपको 9th स्टैंडर्ड से पीएचडी लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का कोर्सेस आपको मिलता है. वन स्टॉप वेब लोकेशन, दूसरा वेबसाइट को जाने का जरूरत नहीं आपको. स्वयं में एक बार एंट्री किया तो डिफरेंट कोऑर्डिनेटर से स्वयं में वो लोग कोर्सेस प्रोवाइड करे. फ्रॉम 9 टू यूनिवर्सिटी लेवल तक का कोर्स अवेलेबल है स्वयं में. स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेट. स्वयं का और एक अच्छा क्या है, इजी है, एसेस कर सकते हैं. ज्यादा कुछ टेक्निकली भी हमको पता नहीं है वेब का यूज करना, वो प्लेटफॉर्म का यूज करना, बट यू कैन यूजिली एसेस एंड मॉनिटर एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर इजी है इस पे. एंड प्योर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम टू क्लैरिफाई दी डाउट्स. एक डिस्कशन फोरम बोल के भी वो ऐड करता है. इफ यू एनरोल एनी कोर्स for clarifying your doubts, it is not like they will only put the recorded video. उस पे नीचे डिस्कशन के लिए, फीडबैक के लिए वो लोग फॉर्म देता है. थ्रू दैट वी कैन डिस्कशन कर सकते हैं, हमारा डाउट्स पूछ सकते हैं, हमारा ओपिनियन दे सकते हैं. इट इज ए हाइब्रिड मॉडल दैट एड्स टू द क्वालिटी ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया एंड हाई एंड पेडागोगी एंड टेक्नोलॉजी. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या है? ऑनलाइन भी होता है, इसका पीडीएफ नोट्स हम प्रिंट करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं. ऑनलाइन में तो ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया हमको मिलता है. इट इज ए हाई एंड पेडागोगी. हाई एंड पेडागोगी मीन्स pedagogy is a art and science of teaching. Pedagogy, that is that term. हाई एंड मतलब हाई लेवल का पेडागोगी होता है. हाई एंड पेडागोगी जनरली वी विल यूज दिस टर्म फॉर ए art and science of teaching. If you go for particular pedagogy, specifically it is the art and science of for teaching the children's or school going ones. If you take the broader meaning, the pedagogy is a science and art of teaching method in education. But now we are teaching in the adults, then that term is different. That is autogagi. That is another term is there. That means adults. We are giving the teaching to the adults. Autogagi. This is pedagogy. Pedagogy means ped. The term itself shows as ped. It is the art and science for teaching the children. But sometimes this pedagogy term we will use as a art and science of the teaching methods or education purpose. Specifically, they ask for a teaching method for adults, then it is pedagogy. That is for adults. It is हाई एंड पेडागोगी. हाई एंड पेडागोगी मतलब बच्चों को कैसे हम सिखाते हैं ना, उस हाई एंड हाई लेवल का पेडागोगी इज यूज्ड इन दी दिस टाइप ऑफ स्वयं कोर्सेस. बच्चों को कैसे सिखता है वैसे नहीं सिखा सकते. हाई एंड पेडागोगी मतलब पेडागोगी से अडल्ट को कैसे हम सीख सकते. दैट वन वी कॉल्ड एज ए हाई एंड. That is the meaning of this high-end pedagogy. Pedagogy, not they have not written simply pedagogy. High-end means the pedagogy level strategy we will use in the higher level. That is because the classes or courses are available for here is 9th to यूनिवर्सिटी लेवल. अगर हम पेडागोगी के जैसे चिल्ड्रंस का लेवल में चिल्ड्रन मेथोडोलॉजी यूज करने लगे तो दैट इज नॉट efficient. That's why the high end pedagogy and andragogy we are using in the
these Swayam methods. All of you understood? Pedagogy, we will go in detail. Pedagogy को दो तरह आप समझ सकते हैं. Pedagogy, if pedagogy, some general meaning क्या है? Art and science of teaching in education. But actually pedagogy हम कब यूज कर सकते हैं? चिल्ड्रंस में हम आर्ट एंड टीचिंग के लिए अगर यूज करें, दैट वन वी कॉल्ड एज ए पेडागॉजी. बट समटाइम्स जनरली पेडागॉजी मींस इट गिव्स द मीनिंग ऑफ टीचिंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, पेडागॉजी बोलते हैं हम. Specifically, if question asked art and science of teaching methods in adult, then it is andragogy. If they only simply ask what is the art and science of teaching in education, then we call as a pedagogy. Pedagogy in general, we can take a meaning as a art and science of teaching in the education. But if you go specifically, pedagogy usually goes with the children's strategy. Andragogy for adult one. Next, geriatric persons also have different type of teaching methods. The term is also there for geriatric people alone. No, I am not remembering that term. But children's pedagogy, adults andragogy, the terms are there. This is the concept of high-end pedagogy. They will apply high-end pedagogy. In the when we learn a pedagogy andragogy, we will understand what is the high-end pedagogy. Just you have to remember, pedagogy is the art and science of teaching in the teaching methods in the education. Then Swayam is a program initiated by the Government of India and designed to achieve the three cardinal principles of education. The Government of India ने ये स्वयं को लॉन्च किया है. थ्री प्रिंसिपल्स क्या है एजुकेशन का? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. सब लोगों को एक्सेस मिलना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन. इक्विटी, हर एक, इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी. इक्विटी के हिसाब से सब एक को ये एजुकेशन मिलना चाहिए, दैट इज इक्विटी. देन क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए. बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स दे हैव स्टार्टेड द स्वयं प्रोग्राम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. The objective of this effort is to make the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged. क्या है? कोई रूरल्स में, कोई डिस्टेंस पेरिफेरल एरिया में क्या रहते हैं, बेस्ट टीचर्स नहीं रहते, रिसोर्स नहीं रहते. That's why they have bring this स्वयं to take the teaching learning resource. सबको मिलना चाहिए. That is the concept. Most disadvantages people are also get the resources. किसी के पास सुविधा नहीं रहता है, टीचर्स नहीं रहते, कॉलेज में टीचर्स नहीं रहते. दैट पीपल आर आल्सो टेक द also make the use of this Swayam platform. In that object, they have created this Swayam. Swayam seeks to bridge the digital divide for students who have the hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of knowledge economy. इस पे क्या है? स्वयं का उद्देश्य क्या है? It is a bridge the digital divide. You have to remember these two words. Digital divide मतलब क्या है? मान लो मैं कोई एक गांव का लड़का हूं और एक लड़का क्या है, स्टूडेंट मुंबई में है और बॉम्बे में. मुंबई में क्या क्या रिसोर्स है, कौन सा स्कूल है, कैसे प्रोफेसर है, कितना टेक्नोलॉजी डिजिटल आगे गए वो स्टूडेंट. बट मैं एक गांव में हूं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है. वो स्टूडेंट को मुझे दोनों के बीच में एक डिजिटल डिवाइड है, मतलब वो बहुत आगे है, मैं बहुत पीछे हूं. दैट इज द डिवाइड. बट स्वयं आने के बाद क्या हो गया? अगर आप मुंबई में रहो और गांव में रहो, दैट डिजिटल डिवाइड इज ब्रिज्ड बाय द स्वयं. आप गांव में भी बैठ के स्वयं से आप कोर्स कर सकते हैं विथ दैट हाई क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स, हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस विल अवेलेबल फ्रॉम स्वयं to village levels to the high level. That is the concept of digital divide को bridge कर रहा है स्वयं. समझ रहे हैं? इनिशियल डेज में विलेज लोगों का, विलेज स्टूडेंट्स को उतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं रहते थे एज कंपेयर टू सिटी वन, एडवांस्ड वन. दैट्स व्हाई दिस आफ्टर स्वयं आने के बाद दैट डिजिटल डिवाइड इज ब्रिज्ड.
अगर गांव में हो सिटी में हो फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर स्वयं में आप एनरोल हो गए तो आपको कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, सब कुछ मिलता है। दैट डिवाइड, डिजिटल डिवाइड हैज ब्रिज्ड बाय द स्वयं, बिकॉज इंटरनेट मेक द रेवोल्यूशन हो गया इंटरनेट। हर एक के पास, हर गांव को ऑलमोस्ट अभी इंटरनेट मिल रहे हैं। हर एक के पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ ना कुछ डिवाइस रहता है। बाय दीज टू स्वयं में फीस भी नहीं रहते। यू कैन लर्न फ्रीली with high level professors, high level teachers. They are providing classes and teaching. This bridges the digital divide for the students. This is the important ones. स्वयं का मेन इंटेंशन यही है। समझ में आ गया ना व्हाट इज डिजिटल डिवाइड ब्रिज? स्वयं सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड हो गया था ना हमने, एक विलेज का डिजिटल वर्ल्ड हमारा आगे नहीं रहते विलेज में, सिटी में दे आर मोर एडवांस। दैट गैप, दैट डिवाइड हैज ब्रिज्ड बाय द स्वयं। अगर समझ में आ गया व्हाट इज द डिजिटल डिवाइड, because this question they have asked in multiple choice question, whether Swayam is able to bridge in the digital divide for students who remained untouched by digital evolution, have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। यस, स्वयं इज ब्रिज्ड दिस डिजिटल डिवाइड। अगर बच्चे रूरल में रहो, सिटी में रहो, क्या है वो सब नॉलेज सबको मिल रहा है अभी स्वयं आने के बाद। इससे पहले, स्वयं से पहले गांव में उनका कितना रिसोर्स है, लड़कों को उतना ही बच्चा सीखता था, उतना ही उसको ज्ञान मिलता था। अभी स्वयं आने के बाद उनको भी हाई लेवल का नॉलेज मिल रहे बिकॉज ऑफ दिस स्वयं प्लेटफॉर्म। दैट इज द कॉन्सेप्ट। बिकॉज स्वयं में 9th क्लास से PhD लेवल तक का कोर्स आपको मिलता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस स्वयं? Yes, sir. Yes, sir. It is an indigenous, purely indigenous, made in India. ये स्वयं क्या है, दूसरा नहीं, made in India and made by Indians and Indian concept. Indigenous IT, massive open online courses platform for the providing the best quality education that can be accessed by anyone, anywhere using IT system. IT system मतलब आपका एक डिवाइस चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। दैट इज द IT डिवाइसेस। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस ऑफ इंडियन इंडिजीनियस के लिए स्वयं एक प्लेटफॉर्म है। अगर कोई आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज खुद एक कोर्स बना के स्वयं का प्लेटफॉर्म में वो लोग अपलोड दे सकते हैं। बाय दैट स्वयं प्लेटफॉर्म वी कैन लर्न और एनरोल द कोर्सेस एंड वी कैन लर्न द different type of courses. That is the Swayam is a platform. The government has created platform. They are giving the encourages to create more courses online, because if you go to the national education policy, new education policy, they have emphasized on the online method of teaching. So different courses, number of courses are creating and adding in the Swayam. In this 15 days only, number of courses are added and the whole Swayam portal is changed. It is day by day, it is upgrading. Number of students are enrolling and taking the advantages of the Swayam. Students looking for the certification shall be registered and be offered certification on successful completion of the course. इसका मतलब क्या है? अगर आपने स्वयं में एक कोर्स लिया, यू कैन टेक द कोर्स फ्रीली। कोर्स लेने के लिए कुछ फीस नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, कभी भी वीडियो देख सकते हैं, कभी भी आपको रिसोर्स यूज कर सकते हैं। बट आपको एक कोर्स कंप्लीट किया बोल के आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। एंड द एग्जाम के लिए 1000 रुपए रहते हैं। अगर हमने 2-3 कोर्स किया है, एग्जाम के लिए यूजुअली दे हैव चार्ज 1000। एग्जाम फीस रहता है सिर्फ, वो भी आपको ऑप्शनल रहता है। अगर आपको एग्जाम चाहिए तो ले सकते, नहीं तो सिर्फ आप लर्न करके बैठ सकते। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए देन यू हैव टू एनरोल फॉर द एग्जाम। द एग्जाम फीस इज 1000। द एग्जाम विल कंडक्टेड बाय द NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, या ऑल इन में PG का एग्जाम सब NTA कंडक्ट कर रहे हैं ना। सो दैट्स व्हाई दे विल गिव द डिफरेंट टाइम स्लॉट। ऑनलाइन का एग्जाम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड रहता है CBT। आपको डिफरेंट सेंटर्स रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2-3 सेंटर रहते हैं, आपको चॉइस रहते हैं कौन सा सेंटर चाहिए। टाइम स्लॉट रहता है। अगर आप 1000 रुपीज फीस भरने के बाद, आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद
पर्टिकुलर टाइम का एग्जाम के डेट में जाके आप एग्जाम लिख के मिनिमम क्राइटेरिया रहते रहते 50% लेना है, ऐसे हर एक कोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं. If you take that much of mark, the certificate will generated and they will uh, mail to your email ID. The certificate course have the credit system. That's why the स्वयं courses are more valuable. ऐसा नहीं है स्वयं में कोर्स किया तो वैल्यू नहीं है. These are more valuable because they are giving the credits. Credit number दिया रहते हैं. I will show next. Now don't worry if you don't understand, just you have to listen now. The assessment takes place through the proctored examination. That is the examination रखता है वो assessment के लिए. And then marks graded secured by learners in this exam could be transferred to the academic records of the learners. What the credit देता है ना वो ABC बोल के रहते हैं, academic bank of credits बोल के उस पे वो transfer करता है. We will learn in the practically. Then SWAYAM would be ultimately capable of hosting 2000 courses and 80,000 hours of learning. इतना कोर्सेस है 2000 ऐड भी हो गए अभी रिसेंटली. पुराना कोर्सेस का इंफॉर्मेशन है, अभी ज्यादा हो गए. देन 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग कंटेंट है उस पे. स्कूल से हायर प्रोफेशनल लेवल तक कोर्सेस भी आपको स्वयं में मिलता है. स्वयं में 4 क्वाड्रेंट्स है. स्वयं में उनका प्लानिंग कैसा है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम्स एंड असेसमेंट. 4 टाइप्स ऑफ और 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं. एनी ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं ना, आपको भी ये 4 क्वाड्रेंट्स याद रखना चाहिए. अगर आप खुद कुछ ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं तो भी ये 4 क्वाड्रेंट्स रहता है. ईच क्वाड्रेंट हैव क्रेडिट्स. How the online courses are designed based on these 4 quadrants only. E-tutorial रहता है. E-tutorial means आपका लेक्चर को आप वीडियो बना के रिकॉर्ड करके देते हैं. E-tutorial रहते हैं. E-content means whatever the notes, study material are there, we will share as a PDF. It is downloadable and printable. E-content रहता है every course के लिए. Discussion forums रहता है नीचे. आप you can join the discussion forum. You can ask the questions, doubts. You can discuss. Then assessment means last वो इनबिल्ट असाइनमेंट्स भी रहते हैं. आफ्टर 1 क्लास के बाद असाइनमेंट क्लियर करना रहते हैं. अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो फाइनल एग्जाम लिखना पड़ता है. दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स. एवरी कोर्स में ये रहता है. वीडियो क्लासेस रहता है, ई ट्यूटोरियल, कंटेंट रहता है, स्टडी मटेरियल, डिस्कशन फोरम रहता है, ज्वाइन होना पड़ता है आपको अगर डिस्कशन करना है. देन असेसमेंट रहते हैं उसके अंदर ही. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है यूजुअली. यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट. दैट इज द असेसमेंट करते हैं एवरी लेक्चर के बाद वो लोग. दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स. ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम्स एंड असेसमेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस 4. देन 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स. स्वयं कैसे चल रहे हैं? दीज नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आर देयर. AICTE, NPTEL, UGC, NCRTs. You have to remember these not by heart, just you have to know 9 coordinators are there in the Swayam. NPTEL, UGC, NCERT, CEC, NIOS, IGNO है, IIMB, निट्टर बोल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च. दिस लोग क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है. उनका फील्ड का रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेस है ना, वो लोग अपलोड करते हैं. वो लोग मैनेज करता है इन स्वयं प्लेटफॉर्म. कोई चाहिए ना अथेंटिक पर्सन्स कोऑर्डिनेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स कोई बनाया, स्वयं प्लेटफॉर्म को दिया. सो दिस IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, वो लोग कोऑर्डिनेटर्स है. वो लोग हैंडल करते हैं दैट टाइप ऑफ रिलेटेड कोर्सेस को. वेदर कंटेंट इज करेक्ट, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द UGC रेगुलेशंस. UGC भी रेगुलेशन देता है ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए. डिफरेंट रेगुलेशंस आर देयर. इफ दैट रेगुलेशंस आर फुलफिल्ड ओनली, then only that online courses are available in the स्वयं. दैट इज मैसिव ऑनलाइन कोर्सेस में. ऐसा नहीं है कुछ भी आप वीडियो करके कुछ भी बोल के कोर्स बना सकते हैं. UGC हैव मेड सर्टेन रूल्स फॉर ऑनलाइन कोर्सेस आल्सो. वो अगर क्राइटेरिया मैच होते हैं तभी आप स्वयं में और मैसिव ऑनलाइन कोर्स में आपका कोर्स दे सकता है. Then it is a स्वयं प्रभा. नेक्स्ट स्वयं प्रभा. डोंट कंफ्यूजन विद स्वयं एंड स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा क्या है? एक DTH चैनल्स है. स्वयं प्रभा इज ए सेट ऑफ 40 DTH educational channels devoted to telecasting high quality educational program on 24/7 basis using GSA 15 satellite. इसका स्वयं प्रभा क्या है? एक चैनल है. आपका घर में DTH में चैनल्स आते हैं ना,
लाइक दैट ये एजुकेशन का चैनल्स है, बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया है। स्वयं प्रभा इज ए 40 डीटीएच एजुकेशन चैनल्स है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल का नंबर भी है। अगर आपको स्वयं प्रभा बोल के आप ऑनलाइन में किया तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स का डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है। आप डीटीएच में सब्सक्राइब करने का भी उधर इंस्ट्रक्शन, अगर वो आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपका डीटीएच में आप ये चैनल्स देख सकते हैं। 24/7 दिस चैनल्स आर अवेलेबल। इसके लिए स्पेशल सैटेलाइट है दिस चैनल्स को ये करने के लिए। थ्रू सैटेलाइट ओनली द डीटीएच में कनेक्शन वैसे ही हो रहा है ना हमको, अभी सैटेलाइट थ्रू ही सिग्नलिंग आते हैं, एंटीना से हम रिसीव करते हैं। सो GSAT 15 सैटेलाइट इज स्पेसिफिकली यूजिंग फॉर दिस एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन करने के लिए दिस सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो दे मे आस्क or you for general knowledge purpose you have to remember GSAT 15 satellite is स्वयं प्रभा से चैनल्स को टेलीकास्ट करने के लिए दिस सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं हम। एवरी डे 4 आवर्स का कंटेंट, नया कंटेंट ये लोग डालता है स्वयं प्रभा चैनल में, एंड इट विल रिपीटेड फॉर 5 more टाइम्स इन ए डे। वही कंटेंट आपको रिपीटेड टाइम में शेड्यूल बना के दिया रहते हैं लोग। स्वयं प्रभा चैनल में आप अगर गए तो उस पे टाइम दिखा रहे थे, ये कॉन्सेप्ट ये टाइम में टेलीकास्ट होने वाला है ये चैनल में। ऐसे 5 टाइम्स आपको सेम कंटेंट विल रिपीटेड। 4 आवर्स का 5 टाइम्स मतलब 4 into 5 20 आवर्स, देन 4 आवर्स का न्यू कंटेंट। दैट्स वाई 24 आवर्स आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है रहता है इस पे। एंड स्टूडेंट्स अलाउ द स्टूडेंट्स टू चूज द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। 5 टाइम्स इसलिए वो टेलीकास्ट करते हैं, मुझे कौन सा टाइम में कन्वीनियंट होते वो टाइम पे देखने को मिल रहा है। सो इट इज आल्सो लर्नर सेंट्रिक, बिकॉज सम लर्नर्स क्या रहते हैं, उनका फैमिली प्रॉब्लम रहते हैं, कुछ काम पे जाते हैं, बाद में उनको रात में टाइम मिले तो रात में देखने को होता है। उनका टाइम कब मिलता है, ही मे एबल टू सी दिस चैनल्स। एंड दीज 34 चैनल्स आर गांधीनगर से ये होते, गांधीनगर में एक सेंटर है उससे ही टेलीकास्ट होते हैं। 34 गुजरात का गांधीनगर में बिसाक बोल के उसका फुल फॉर्म आप देखो कुछ तो है, इंस्टीट्यूट बिसाक बोल के द गांधीनगर में। थ्रू दिस सेंटर द सैटेलाइट को सिग्नल भेजते, सैटेलाइट से हमारा घर तक डीटीएच डायरेक्ट टू होम। डीटीएच का मतलब है डायरेक्ट टू होम। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय इग्नो, एनसीईआरटी, एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीएस, दैट कोऑर्डिनेटर्स लाइक कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस लोगों ने वीडियो और कंटेंट बना के दिस चैनल्स को रन करता है स्वयं प्रभा में। The Inflibet Center maintains the web portal DTL channels. Inflibet बोल के एक सेंटर है, ये भी गुजरात का गांधीनगर में है शायद। इन्फ्लिबनेट, ये इन्फ्लिबनेट शोध गंगा शोध, इस पे भी इन्फ्लिबनेट का नाम सुना होगा आप। कौन कौन नाम सुना है, कितना लोग नाम सुना है इन्फ्लिबनेट? शोध गंगा में आपका थीसिस को अपलोड करना रहता है ना, सो दिस इन्फ्लिबनेट सेंटर इज मेंटेनिंग दी ऑल दिस डिजिटल रिपोजिटरी, आपका थीसिस सब इसमें रहता है। इन्फ्लिबनेट गांधीनगर में है ये शोध गंगा। शोध गंगा कितना लोग सुना है, नाम सुना है कोई अपलोड? और इट इज इंस्ट्रक्टेड दैट ऑल दी thesis work or uploaded in this शोधगंगा, this is Inflibnet। कोई अगर अदर स्कॉलर आपको उनको चाहिए आपका thesis, then he may go this शोधगंगा that will maintained by this Inflibnet। ये फुल फॉर्म आप देख लो, बहुत क्या है Inflibnet, बहुत important है, but here I am just mentioning Inflibnet center maintains the this web portal। हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सब कुछ का कोर्स इस पे रहता है। हायर एजुकेशन में देखो लॉ, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, इवन मेडिसिन का कोर्स भी, मेडिकल कोर्सेस भी एडेड हुआ है। आई विल शो एवरी हायर एजुकेशन में क्या क्या कोर्सेस है उसका रिलेटेड सारे कोर्सेस इस पे मिल रहे हैं अभी हमारा स्वयं प्रभा चैनल्स में। देन स्कूल एजुकेशन का तो पहले से ही शुरू है। स्कूल एजुकेशन लेवल 9 to 12 लेवल्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लासेस भी चलते रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उनको तैयार करने के लिए भी स्वयं प्रभा में बहुत चैनल्स मिलते हैं हमको। किसी किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं है ट्यूशन लगाने के, बाहर क्लासेस लगाने के लिए, अच्छा स्कूल जाने के लिए, देन these are helping that type of people। अगर हमने यूज नहीं किया है, मुझे भी अभी अभी ये पता चला है, but these are running from lot of years। by through this medium lot of students or learners are learned the
concepts. They may done the कोर्सेस. इग्नो में डिस्टेंस कोर्स करने वाले लोगों को वो कॉन्सेप्ट के लिए वो टाइम पे रेडियो में क्लासेस चलाता था. बाद में स्वयं प्रभा आने के बाद फॉर दे हैव गिवन दी चैनल्स. वो टाइम पे इंटरनेट लैपटॉप नहीं था, वो लोग वीडियो बनाता था क्लास का एंड स्वयं प्रभा चैनल में टेलीकास्ट करता था. लर्नर्स वो टाइम पे अनाउंस करता था, वो लोग वो टाइम पे वो टीवी में देखने के लिए मिलता था. नाउ टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड एंड we can see the schedule, repeat, save, everything will, but this thing running from lot of years also. Then curriculum based courses that can be meet the needs of lifelong learners of Indian citizens. Lifelong learning concept एक national education policy में है. अगर lifelong आप कुछ ना कुछ learn करने के लिए आपको मन है तो आपको learn करने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, कुछ opportunities चाहिए. That's why this Swayam Prabha and Swayam all are helping the lifelong learners and assist the students. ये 10th 11th 12th स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको नीट ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने के लिए असिस्टेंस भी स्वयं प्रभा चैनल से मिलता है. Then online teaching assistant apps, these are the apps, applications useful for the आप अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेस बना रहे हैं, वो लोग भी क्या क्या डिफरेंट एप्स यूज करते हैं वो है. आप आपको ये समझने के लिए आप खुद एक बार टाइप करके आप एप्लीकेशंस को एक बार देखे तो इसका बारे में आइडिया आ जाएगा. मैं सिर्फ क्या है बोल सकते, लेकिन एक्चुअली कैसे वर्क करते एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक्चुअली देख सकते हैं. देर आर डिफरेंट असिस्टिंग एप्स. देर आर पेडलेट, मिंटीमीटर, गूगल एक्सपीडिशन, एजुपजल, माइंड मिस्टर, स्क्रीन कास्टिंग. क्या क्या काम करते हैं दिस एप्लीकेशन आई विल टेल ब्रीफली बिकॉज इवन आई डोंट यूज दिस applications. I am using different one, but you have to remember in future अगर आप teaching profession में गए, these applications may useful for you because nowadays the teaching will we are including technologies and advancements in our teaching methods. आगे ये सबको होने वाला है. सब लोग ये because ट्रेंड कैसे चल रहे हैं, क्लास का चाक पीस और ब्लैक बोर्ड का ट्रेंड गए. अभी विजुअलाइजेशन का थिंकिंग अलग हो गया. सब लोग हायर लेवल का विजुअलाइजेशन देके आपको ब्लैक बोर्ड का जमाना चल गया. अभी हम कुछ नया करना है एडवांसमेंट में, तो ये टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट करना है. अभी तो कोई कोई कॉलेज में विदाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लास नहीं चलता है. सो दैट इज द थिंग. ब्लैक बोर्ड भी रहता है लेकिन मैक्सिमम लोग बच्चे का माइंडसेट ऐसा शिफ्ट हो गया विदाउट पावर पॉइंट उनको क्लास ही नहीं लगता है. दे ऑल आर डिपेंड ऑन द पावर पॉइंट. अगर पावर पॉइंट बिना पावर पॉइंट आप सिखाने गए, टीचिंग करने लगे तो उनका बिहेवियर और उनका emotion ही अलग होता है. So that's why as a technology is going upgrading, we are also upgrade our knowledge and we have to modify ourselves with this technologies apps. पहले जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग कौन करता था, उतना यूज नहीं करता था. अभी by using this technology we are conducting the classes, we are learning in the home only. That's why these things are also in future days these are useful. So हमको अभी से ही पता हो तो that time we will use easily. What are this Padlet app क्या है? Padlet क्या करते हैं? It is a online tool यूजर्स के लिए डिजिटल बोर्ड के जैसे है. बहुत लोगों ने एक ही बार इमेज, टेक्स्ट, आपका रिलेटेड थिंग्स आप शेयर कर सकते हैं. एजुकेशन सेटिंग्स में कोलैबोरेशन प्रेजेंट करना है, देन दिस पेडलेट कैन बी यूज्ड. ये ऐप है एक पेडलेट. देन मेंटीमीटर क्या है? अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है, प्रेजेंटेशन दिस मेंटीमीटर ऐप से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, रियल टाइम फीडबैक मिलता है आपको. मतलब अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं दिस ऐप से, मैं रियल टाइम फीडबैक, ये प्रेजेंटेशन में ये को थोड़ा करेक्शन करो, ऐसे आपको फीडबैक दे सकते हैं. एंड कौन कौन आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं अभी पोल्स भी कर सकते हैं दैट विथ दिस मेंटीमीटर ऐप. देन गूगल एक्सपीडिशन, ये क्या है? ये वर्चुअल टूर का टेक्नोलॉजी है. अगर आपको किधर तो बच्चों को टूर लेके जाना है, वो प्लेस का इमेजेस दिस गूगल एक्सपीडिशन में रहता है. देन यू नीड नॉट टू गो फिजिकली टू दैट प्लेसेस. अगर वर्चुअल इमेजेस से 360 डिग्री एंगल फोटो से
वो आपको एक टूर के जैसे ही फील देता है। दिस एप्लीकेशन, इफ यू सर्च गूगल एक्सपेडिशन यू विल नो मोर अबाउट दिस। मुझे भी ये टेक्नोलॉजी या एप्स का बारे में ज्यादा पता नहीं चलता है, बट दीज आर दीज थिंग्स, अगर आप यूज करने तक उसका बारे में आपको डिटेल पता नहीं चलते। बस इतना पता है मुझे, गूगल एक्सपेडिशन से यू कैन सी दी वर्चुअल टूर 360 डिग्री सेल्सियस 360 डिग्री से आप व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हमारा पीएसएम में एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैट्रिन्स का बारे में रहते हैं ना, वो बोरहोल, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है। उसका बारे में सर्च करना है तो एक पूरा आपका हिस्ट्री में किधर किधर ये टॉयलेट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, उसका इमेजेस आपको पूरा इमेजेस मिलता है 360 डिग्री। अगर आपने वो वर्चुअल गैलरी में गए तो पूरा वो रियल गैलरी में जाके हमने वो म्यूजियम विजिट करे वैसा लगता है आपको। दैट इज द थिंग, मैंने उधर जाने का जरूरत नहीं वो म्यूजियम देखने के लिए, इधर ही बैठे बैठे मेरा लैपटॉप में मैं वो पूरा म्यूजियम ऐसे देख सकते हैं, रियली आई एम इन द म्यूजियम। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस गूगल एक्सपीडिशन। समझ में आ गए ये आप ऐसे कैसे काम करता है? अगर अजंता एलोरा जाना है, अगर बच्चों को लेके जाने को नहीं होगा, अगर गूगल एक्सपीडिशन में आप एंटर करके वो आप दे सकते हैं। बच्चों को क्या फील आते हैं, रियली वी आर यू गॉन दैट प्लेस। अगर आप इससे एक्स्ट्रा वी आर, वो वी आर बोल के हमको चश्मा रहता है ना ऐसे लगा के, सो वो एप्लीकेशन के तो यू आर इन रियली इन दैट प्लेस ऐसा लगता है। दीज आर द हायर टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द एजुकेशन। एक हम अप्लाई करते जा रहे हैं डिफरेंट फील्ड में, बट जस्ट यू हैव टू नो व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज आर यूज हो रहे हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम में। वी शुड अवेयर ऑफ दिस थिंग्स आल्सो। ये आप देख सकते हैं डिटेल। और स्क्रीन स्टोमेटिक इज ए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आपका वीडियो, आप बोलिए, कुछ डाउट है? सुप्रिया, हेलो, यू हैव रेज्ड द हैंड। सुप्रिया, कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. ओके। ये सारे चीजें आपको सिर्फ सुन रहे, आप एक बार ओपन करके देखे ना तभी पता चलता है आपको। हाँ, समझ में रहे ना, ये एप्लीकेशन से, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एप्लीकेशन ओपन कर, मैं फेसबुक के बारे में बता तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया, फेसबुक पे ऐसे रहते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट रहते हैं, लेकिन आप कब यूज करते हैं ना तभी आपका उसका बारे में आपको पता चलेगा। व्हाट्सअप का बारे में तब आपका व्हाट्सअप यूज करेगा तभी पता चलेगा। टेलीग्राम का बारे में आपको टेलीग्राम यूज करने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी बहुत आइडिया दे सकते टेलीग्राम में, ऐसे बिग फाइल भी हम शेयर कर सकते हैं वैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप रियली यूज करने के बाद ही उसका यूसेज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है एग्जैक्टली आपको पता चलता है। बट ये ऐसे एप्लीकेशन है ये तो पता होना चाहिए आपको। व्हाट्सअप है ये पता तो होना चाहिए ना, बाद में ही आप उसको यूज कर सकते हैं आपको एप्लीकेशन। सो दीज आर द एप्लीकेशंस यूज्ड इन द एजुकेशन डिफरेंट। So these are the question based on the that thing you will read, self read। आप यूज भी एक एक बार ओपन करके भी देख लो अगर आपको टाइम है। just 8:15 45 time, in 15 minutes I will show the Swayam platform in briefly आपको। स्वयं का बारे में कोई सुना है, कोई यूज किया है इससे पहले? कोई, एनीवन? all of you see my screen, Google website page? Yes, sir. Yes. And Yes, now sir. I will type Swayam। स्वयं सेंट्रल बोल के आता है, आपको उस पर क्लिक करना है। सो दिस इज द स्वयं प्लेटफॉर्म। इधर आप यूजर आईडी पासवर्ड भी पूछते हैं, अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपका एनरोल कर सकते हैं, आपका एक लॉगिन हो सकते हैं। और अदरवाइज यू कैन यूज यूर जीमेल। मैं जीमेल यूज करके ऑलरेडी इस पे एनरोल हूँ, इसलिए मुझे डायरेक्ट जीमेल का आ रहा है।
आपको अगर आप न्यू वन है दिस स्वयं को, वो पूछता है आपको अगर यूजर आईडी पासवर्ड के हिसाब से आपको बार बार लॉगिन होने का चाहिए, और यू कैन सिंपली गो विथ दी गूगल, फेसबुक, ऐसे लिंक रहता है गूगल के साथ। आप लिंक किया तो आपका जीमेल आईडी से आपका एक लॉगिन होने का अकाउंट बन जाता है। देन अकाउंट होने के बाद इस पे क्या है देखो, अबाउट स्वयं, स्वयं का बारे में है। व्हाट 9 कोऑर्डिनेटर्स वी स्टडीड, दीज आर द 9 कोऑर्डिनेटर्स। अगर डिटेल आपको एक एक कोऑर्डिनेटर्स का इंडिविजुअल काम क्या है वो सारे चीजें आप क्लिक किए तो उसका बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। देन इस पे देखो 9th से यू पीएचडी लेवल तक का कोर्स अवेलेबल है। मैंने ये बताया आपको। इधर स्कूल एजुकेशन रिलेटेड कोर्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, NCERT, ये दोनों कोऑर्डिनेटर स्कूल एजुकेशन रिलेटेड कोर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन रहते हैं ना, आउट ऑफ स्कूल, ये डिफरेंट MA BA ओपन स्कूलिंग जैसे रहते हैं ना, ये लोग इग्नो एंड निटर, दीज कोऑर्डिनेटर्स आर maintaining the out of school education. Then undergraduate level का education का courses, NPTEL, AICTE, CEC, IIMB, these coordinators are maintaining this undergraduate education level courses. Then NPTEL, AICTE, IIMB, UGC, these are maintaining the postgraduate level courses. This is the concept. समझ में आ गई ये क्या है, ये कौन सा कोऑर्डिनेटर कौन सा लेवल का कोर्सेज को मैनेज कर रहा है, ये दिखाया है इस पे। समझ में आ गया ये ऑल ऑफ यू? देन Yes, sir. अगर आपको कोर्स नेशनल कोऑर्डिनेटर हो गया, ऑल कोर्सेस, इसमें आपको कोर्स सर्च करना पड़ता है। आप एक बार एप्लीकेशन में जाके ट्रायल एंड एरर जैसे यूज किया तो आपको ज्यादा पता चलेगा। जस्ट आई एम शोइंग। अगर देखो कैटेगरी चाहिए मुझे, इधर कैटेगरी दिखाते हो कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, एनपीटीएल का भी एक खुद का मुख है, डोमेन है। एनपीटीएल आल्सो गिविंग कोर्स इन द स्वयं, एंड एनपीटीएल इटसेल्फ इज ए डोमेन भी है। एनपीटीएल उधर भी एक सेपरेट भी मिलता है, लेकिन एनपीटीएल का ज्यादा कोर्स स्वयं में वो लोग दिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एजुकेशन के बारे में ये कर रहे, टीचर एजुकेशन के बारे में टाइप किया हमने। और यू कैन सिंपली रैंडमली सर्च, अगर रिसर्च बोल के टाइप किया आपने रिसर्च, वो दिखाते कौन सा रिसर्च का कोर्सेस आपको मिलता है। जैसे रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या टाइप करते हो रैंडमली, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो इधर आपको सर्च करना है। और कोर्स टाइटल पता है तो कोर्स टाइटल के करके भी आप सर्च कर सकते हैं। एक बार आप एनरोल होने के बाद ही आपको आइडिया आ जाएगा। हमारा ज्यादा तरफ मेडिकल कोर्स क्या है, एनपीटीएल वालों ने कंडक्ट करता है रिलेटेड टू एआईसीटी एंड एनपीटीएल। अगर एक बार कोर्स को एनरोल होने के बाद क्या होता है, आपका जीमेल से आपका माई कोर्सेस में आपका कोर्सेस रहता है। मैं मेरा क्या है आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया आता है। देखो मैंने माई कोर्सेस में गए, इतना कोर्सेस को मैं एनरोल हुआ था, अभी भी थोड़ा चल रहे, 1-2 कोर्स खत्म हो रहे। मेडिकल लॉ, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन नेचुरल साइंसेस, बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च। जिस कोर्स को मैंने एनरोल किया, कंप्लीट किया, एग्जाम भी किया, मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। दिस इज बायो कोर्स, बेसिक कोर्स इन द बायोमेडिकल रिसर्च। दिस कोर्स इज मैंडेट फॉर द एमडी स्कॉलर्स रहते हैं ना, बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च। दिस कोर्स ने IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनको कंपलसरी किया, अगर एमडी कर रहे कोई MBBS का लड़का, इनका पीजी में ये कोर्स उनको कंप्लीट करना है, देन ओनली दे विल गिव दैट फर्स्ट ईयर और एमडी कंप्लीट करने के लिए एक सुविधा देते हैं। अदरवाइज विदाउट दिस क्वालिफाइंग दिस बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च, दे विल नॉट कंसिडर हिज MD। ये मैंडेट रहे उन लोगों को। हमारा आयुर्वेद में भी ये मैंडेट हो सकता है आगे। अभी कर्नाटक और RGHS में क्या है, दिस बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च है ना, ये मैंडेट कर दिया। अगर ये कोर्स को आपने PhD, पार्ट टाइम PhD में हम ज्वाइन हुआ तो ये कोर्स को वो लोग मैंडेटरी किया, आप स्वयं में ये कोर्स कर लो बोल के वो लोग बताते। बेस्ड ऑन दिस ओनली दे विल नो दैट योर बेसिक रिसर्च का नॉलेज है। दे विल ये मतलब क्या है, इतना स्टैंडर्ड है कोर्स है। वो लोग
गिव द ऑथेंटिकेशन ऑफ, अगर दूसरा कोई ऑनलाइन कोर्स किया आपने रिसर्च के लिए, they will not accept. But if you do this basic course in biomedical research and if you have certificate, they will accept it. That is the importance of doing the SWAYAM courses in the SWAYAM. Then डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं. जस्ट आई विल शो दी. मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक कोर्स किया है. इस पे देखो, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, 6 ऐसे वीक वाइज कंटेंट डालते रहते हो. वीक 1 में अगर आपने से ऐसे उनका, दिस इज ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल बोलते हैं वीडियो को, हमने ई ट्यूटोरियल बोलता है. पता चला ना आपको, आप 4 क्वाड्रेंट्स था ना स्वयं का. ई ट्यूटोरियल, ई ट्यूटोरियल का मतलब है ये वीडियो. देन कंटेंट, कंटेंट में क्या है, इस पे हर एक वीडियो के बाद आपको मटेरियल मिलता है. देन that is e-content, e-tutorial video, and e-content is material, and the discussion forum also you can join, and you may give the feedback here. Feedback भी दे सकते हैं आपको. That is the discussion forum. And assignment, assignment में देख सकते हैं आप every week के बाद week 1 assignment कुछ रहते हैं. assessment assignment, you have to submit the assignment. देन आपका मार्क्स कोई कोई कोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो मार्क्स भी बताते, और कभी कभी वो फाइनल में ही आपको मार्क्स बताते. सो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्सेस. 4 क्वाड्रेंट्स आपको पता चला. और वो लोग एग्जाम के लिए एनरोल किया तो मैसेज करते हैं. हाँ, बहुत इजी है स्वयं में, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. दैट्स व्हाई ऑल ऑफ वी आर प्रेफरिंग द स्वयं. सो एग्जाम का बारे में, एग्जाम लिख के सर्टिफिकेट चाहिए तो 1000 रुपए आपको भरना पड़ता है. Till what time the video will be accessible, sir, here in Swayam? Swayam, you can use unlimited time, unlimited period. Once you have to join the course. अभी क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट डेट February 29 दिया रहते वो लोग. February के बाद आप वो कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट साइकिल में आप ज्वाइन कर सकते. साइकिल्स रहते हैं उस पे स्वयं में. अभी ये बीसीबीआर का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग चाहिए तो. बीसीबीआर का साइकिल्स रहते हैं वो एवरी 6 मंथ्स. तो यू हैव टू सर्च बीसीबीआर बोल के सर्च करो. अगर ऑन गोइंग है, और उनका एक ये रहते हैं, आपको दिखाते हैं मैं. ज्वाइनिंग डेट के लिए एक टाइमिंग रहते हैं, वो सेशन के लिए, वो साइकिल के लिए. देन ओनली यू मे एबल टू ज्वाइन दैट सेशन. बट रिपीटेड होते रहते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अबाउट द कोर्स, ये देखो, करंट स्टेटस, ऑनगोइंग, कोर्स टाइप इलेक्टिव, ड्यूरेशन कितना है ये कोर्स का, 12 वीक्स. ये कैटेगरी में क्या है, फैकल्टी डोमेन, फैकल्टी के लिए है, हमारे लिए यूजीसी. इस पे अबाउट द कोर्स भी लिखा है, देखो. दिस कोर्स ओवरऑल conceptual methodology is going to the successful conduct of research, philosophy of science, everything. Intended audience, audience कौन है, किसके लिए ये कोर्स बना है, PhD students mandated by the UGC. Bachelor and master students interested in pursuing research career also may take it. This course content is suitable for students of all disciplines of basic science, medical science and engineering. This तीनों को suitable होने जैसे content है इस पे research methodology का. So that is the concept. And category हो गया. क्रेडिट पॉइंट्स, अगर मैंने ये कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम में पास हुआ तो मुझे 3 क्रेडिट मिलता है. 3 क्रेडिट्स, दे हैव गिवन द 3 क्रेडिट पॉइंट्स. लेवल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल का है. पीएचडी के लिए मैंडेटरी है ना, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का बच्चों के लिए है.
यूजी का बच्चों के लिए दिमाग में रख के नहीं बनाई है। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट के अबोव बच्चों को ही ये समझ में आता है। अगर यूजी बच्चे को अपनी एक कोर्स एनरोल किया तो उतना समझ में नहीं आते। दिस इज दी कॉन्सेप्ट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। स्टार्ट डेट 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ था ये, और एंड कब होते हैं? ये 12 वीक्स का कोर्स 12 अप्रैल को खत्म होते हैं। एनरोलमेंट डेट देखो इधर 5 फरवरी 2024 था। अगर 5 फरवरी 24 से पहले मुझे इधर एक ऑप्शन आता था ज्वाइन टू कोर्स। अभी ये एनरोलमेंट का डेट खत्म हो चुका है, एनरोलमेंट 5 फरवरी। नेक्स्ट साइकिल में, ये साइकिल 12 वीक्स खत्म होने के बाद फिर से एक साइकिल के लिए ये लोग ये टाइम देता है, तब आपको ज्वाइन होना है एनरोलमेंट डेट के अंदर। देन टेंटेटिव एग्जाम डेट देता है, देन एग्जाम का सेंटर्स एवरीथिंग आप एक बार इसके अंदर आ गए तो आपको पता चलता है। दिस इज एआईसीटी अप्रूव्ड एंड एफडीपी कोर्स। एफडीपी मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट कोर्स, ये रिकॉग्नाइज रहता है, दैट इज द इम्पोर्टेंस। ये वीक वाइज डालते हैं, अभी 8 वीक का चल रहा है इस पे। अभी ज्वाइन नहीं होने को नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी एनरोलमेंट एंड्स इन दी 5 फरवरी। नेक्स्ट साइकिल में आप ज्वाइन हो सकते हैं अभी आपको। दिस इज दी स्वयं। स्वयं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड दिस स्वयं प्लस आल्सो। स्वयं बहुत अच्छे से चल रहा है, इसलिए दे आर इंटरेस्टेड एंड दे हैव आल्सो लॉन्च्ड दिस स्वयं प्लस। दिस इज स्वयं प्लस। नंबर ऑफ कोर्सेस यू कैन डू, साइन इन। ये सारे स्वयं प्लस बोल के एक बनाए हैं वो लोग, क्योंकि वो स्वयं में ज्यादा कोर्सेज के बाद लॉट ऑफ लर्नर्स बढ़ रहे, इंटरेस्ट बढ़ रहे, डिमांड बढ़ रहे, तो वो लोग स्वयं प्लस को ही डेवलप किया। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज को वो लोग किया है, हर तरफ का सिस्टम स्पेशलिटी का कोर्स बनाए वो लोग। इस पे डोमेन है इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, इस पे आप जा सकते हैं। a number of courses available in the this swayam plus also. Once you will go, you will understand this all things. इधर अभी मेडिकल कोर्सेज भी मिल रहे हैं, अभी एनाटॉमी का क्लासेस मिल रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लासेस मिल रहे हैं। ऐसे बहुत मेडिकल कोर्सेज भी स्वयं में शुरू हुआ है। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोर्स भी चालू हुआ है, बट अभी दिखाए नहीं रहे इस पे। सो वंस यू एंटर द स्वयं एंड यू विल अंडरस्टैंड, आप रैंडमली चेक करते जाना है, आपको कोर्स एनरोल होना चाहिए। some important courses they have mandated। इन पीएचडी में क्या कर रहे हैं, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, स्वयं में कौन सा कोर्स है, ये कोर्सेस मैंडेटरी कर रहे हो पीएचडी स्टूडेंट्स को। ये कोर्स आपको करना है, एनरोल होना है, उस पे असाइनमेंट भरना है। बेस्ड ऑन दैट असाइनमेंट्स ओनली वी विल गिव दी। प्री पीएचडी एग्जाम रहते हैं ना एवरी पीएचडी में, बेस्ड ऑन दैट कोर्स ओनली दे आर गिविंग द एग्जाम्स। एंड किधर किधर कोर्स का डायरेक्ट सर्टिफिकेशन ही मैंडेट कर रहा है, बीसीबीआर बेसिक बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च। अभी ये शायद ये साइकिल नहीं चल रहा है, इसलिए ज्वाइन नहीं दिखा रहा है ये। अपकमिंग कोर्स स्टेटस, अपकमिंग आगे आने वाला है। अभी एक साइकिल खत्म हो गए, इधर दिखाते देखो अपकमिंग, करंट स्टेटस अपकमिंग है। कोर्स टाइटल, कोर्स टाइप सेल्फ फेस्ड, मतलब सेल्फ ओन स्टडी करना है, वो सेल्फ फेस्ड का मीनिंग होता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है। This is the intended audience, mandatory course for medical postgraduates। academic year 2019 से 20 onwards कौन कौन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन हुआ है उनको मैंडेटरी है ये। एंड टीचर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड विथ एनएमसी, ये मेडिकल एमबीबीएस कॉलेज का टीचर्स के लिए भी मैंडेटरी है। हम कब एग्जाम लिखने के लिए गए थे तब ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स एंड ऑलरेडी असिस्टेंट टीचर्स और टीचर्स कौन कौन है उस मेडिकल कॉलेज में, वो लोगों को भी मैंडेटरी है। सो आगे हमको भी मैंडेट हो सकता है, और मैंडेट नहीं हो तो भी नॉलेज तो मिल सकता है। सो आप लोग सर्च करते रहना है, ये कोर्सेस स्वयं में बहुत सारे कोर्सेस को आपको करने का
चांसेस है और यूजफुल भी है। नंबर ऑफ कोर्सेस है, आपको चूज करना है कौन सा है क्या है थोड़ा, नहीं तो हर एक कोर्स को आप एनरोल करके देख भी नहीं सकते। इंपॉर्टेंट कोर्सेज को आप ज्वाइन करना है और यूज यूज लेना है उसको। दिस इज अबाउट स्वयं। समझ में आ गया आपको स्वयं क्या है, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. स्वयं एक Yes, sir. प्लेटफॉर्म है, इस पे लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेस है, मूक, व्हाट वी कॉल मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है ना इंडियन में। सो दिस इज ए स्वयं इज ए प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये स्वयं को लॉन्च किया है। अभी स्वयं प्लस आ गया, इस पे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स है, इग्नो, निटर, एनपीटीएल, ये लोग ने कोर्सेज को डालते रहते हैं, वो दैट इज दी, दे आर कोऑर्डिनेटर्स। आपको इधर सर्च करना है और अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गो टू द नंबर ऑफ कोर्स। दिस बायोमेडिकल कोर्स का है, और डायरेक्शन भी देता है, हाउ टू एनरोल, एक्सेस अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, गो टू द कोर्स, assess your material, submit assignment। असाइनमेंट में अगर more than 50% आ गए, then you will register for the exam, then you will appear exam, then एग्जाम में भी 50% से ज्यादा है तो आपको कलेक्ट सर्टिफिकेट आता है। अगर असाइनमेंट में आपको लेस देन 50% आ गया तो फिर से आपको असाइनमेंट लेना पड़ता है, इधर रीटेक द टेस्ट एंड 50% से ज्यादा करना पड़ता है, देन ओनली यू आर एबल टू एनरोल फॉर एग्जाम, अदरवाइज यू आर नॉट एबल फॉर एनरोलिंग द एग्जामिनेशन। ऐसे हर एक कोर्स के लिए अलग अलग रूल्स है, कोई कोई असाइनमेंट का भी परसेंटेज लेता है, कोई कोई कोर्स में डायरेक्ट फाइनल एग्जाम का मार्क्स ही कंसीडर करता है। इट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस। हर एक कोर लेक्चर के बाद आपको मटेरियल भी मिलता है, ई मटेरियल, यू कैन डाउनलोड इट आल्सो। ये इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ रिसर्च, लेकिन आपको वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब में भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्यूटोरियल हो गया इसका बारे में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इधर देखो क्या क्या बताए रहते हैं उसका सब सारे मटेरियल्स इधर अपलोड किया रहते हो। इसका नोट्स आप यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन यूज इट। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपको इन डिटेल वेरी क्लियर एंड इम्पोर्टेंट नोट्स रहता है, ये ऐसे नोट्स नहीं रहते, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हाईली प्रोफेशनल वन बनाए हुआ रहता है, इसलिए दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फीडबैक दे सकते हैं आप, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, सो एवरीथिंग, असाइनमेंट भी रहता है इस पे। अगर क्विज नंबर 1 असाइनमेंट, देखो ये असाइनमेंट मेरा हो गया, well, इसलिए ऐसा देख रहे हैं। देखो इस पे दिखाते हो, यू हैव क्लियर द मिनिमम स्कोर रिक्वायरमेंट, 50 मार्क्स लेना रहता है असाइनमेंट में, हियर 70 स्कोर, देन ओनली इट विल शो ग्रीन। अगर 50 के कम है, यू हैव नॉट क्लियर बोल के आते, फिर से एक बार असाइनमेंट देना पड़ता है आपको, दैट इज द थिंग इन दिस स्वयं। देन फाइनल आप असाइनमेंट होने के बाद आपको ये आते हैं, मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है इसलिए नो रिव्यू ऑफ असाइनमेंट बोल के आ रहे हैं। आपका कोर्स का प्रोग्रेस भी आप खुद दे सकते हैं। मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो गया, दैट्स वाई इट्स शोइंग 100%, कोर्स प्रोग्रेस खत्म हो गया मेरा। यूनिट वाइज आप यूनिट वाइज कितना कितना कोर्स देखे हैं, मेरा सब कोर्स देखा है मैंने, इसलिए 100% दिखा रहे हैं। देन असाइनमेंट स्कोर, ईच असाइनमेंट में मेरा स्कोर कितना आ गया, फर्स्ट असाइनमेंट में 70, सेकंड में 100, थर्ड में 100, ऐसे 60, आपका ओवरऑल असाइनमेंट का मार्क्स फाइनल में आ जाते हैं, आपको ऐड करके उसका असाइनमेंट का एवरेज भी निकालते हो लोग। सो ओनली 50% के अबव आपका असाइनमेंट स्कोर है, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू एनरोल दी BCBR फाइनल एग्जाम। NTA will conduct that course, multiple choice रहता है, no negative, 3 hours रहते हैं। So if you done this course, it is very useful। हमने किया है, मैं, रोहित सर, बहुत सारे हमारा कोलिग्स किया है, इट इज मोर यूजफुल।
अगर आपको अभी नहीं हो गए तो आगे आपका पहले आपका फोकस क्या रहना चाहिए अभी एनटीटी। सो उसके बाद आप ये सारे चीजें अभी आपको पता हो तो आप तुरंत आप कॉलेज ज्वाइन होने के बाद ये सारे चीज करना पड़ते तभी आपका ये रहता है। ओके, जस्ट आई एम टेलिंग फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एग्जाम में नहीं है ये, सिर्फ आपका यूजफुल होने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में इतना नहीं पूछते, आपको पता नहीं है बोल के मैंने बता रहे व्हाट आई वी हैव डन, दैट्स व्हाई वी आर आई एम शोइंग। आपको ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूजफुल के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉट फॉर एग्जाम पर्पस। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? क्योंकि मुझे नहीं Yes. पता इसलिए आपको भी पता होना चाहिए, आप दूसरों को बताना चाहिए, ऐसे ये इंटेंशन से मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Okay, we'll Yes, sir. stop the intention is you have to make use of such things. That is the theory में इतना पूछते नहीं है, एग्जाम पर्पस नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो एनी डाउट है तो पूछ सकते, नहीं तो नो।